الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Now I'd like to invite Ms. Aniza Yunus to recite verses from the Bible. From the word of God, Proverbs chapter 11, verse 14. For lack of kindness, a nation falls, but victory is won through many advices. Let this verse remind us today that policy are strongest and built upon wisdom, collective dialogue, and shared responsibility. May our effort be guided by wisdom, justice, and common good. Amen. Thank you very much. Ladies and gentlemen, today's policy discussion is on harnessing the demographic dividend of Pakistan. It's a follow-up of the excellent report, action plan that was prepared by Ms. Dividend on behalf of UNFPA. This initiative, this policy dialogue is being organized under the initiative of D4D, Data for Development, which is basically a UNFPA started initiative in which SDPI is their functional partner on bridging the gap between reality and policy through data and data analysis and making informed decisions and making informed policy evaluations. Today's dialogue is organized by the Population Research Center, FC College, with partnership and the driving force of UNFPA and SDPI. Whenever we talk about demographic dividend, usually discussion starts with statistics. 60% of Pakistan's population is under 30, 50% are of working age. In Punjab, 58% of the population is working age. So we do see this potential, which can lead us into economic prosperity. But that demographic burden hinges on a double-edged sword, and dividend can become a burden. As far as the dividend is concerned, a very interesting example comes from East Asia, where the development of the East Asian region experienced from the 1960s up till the 90s, 1/3 of that development came from the demographic dividend. The other 2/3 came from an enabling environment that allowed that demographic dividend to materialize. And this is why basically why we are here, to see whether we can or how we can create an enabling environment within the province of Punjab, keeping the action plan that was developed by Ms. Duran Ayab as the roadmap. Another evidence that demographic dividend helps nations is in the recent literature that is coming out of India. And they believe that they can outgrow China because of the demographic dividend that they are experiencing, which China is not experiencing. And they feel that their economic growth can increase because of that. But on the other hand, as I said, demographic dividend is a double-edged sword. And when demographic dividend is not capitalized, you have examples like the Nepal, like the Arab Spring, where the energy and of youth, when not properly leveraged, turns into negative forces of political unrest, poverty, and other social problems. And this is why it is a moment of truth for Pakistan. We are 154th out of 184 nations on the Youth Development Index. This year we were rated anonymously 148th out of 148th in the Gender Parity Index. We are the last country in the world. 36% of our children
between the ages of 5 and 16 are out of school, and that amounts to about 23 million children. So the idea today is to invite Dr. Duru Nayab, who was kind enough and generous enough to join us today, to present her action plan. And we have invited stakeholders from prestigious government departments, research institutions, academia or academic institutions. And we would like your feedback on this action plan as to its relevance to the context of Pakistan and whether it can be localized in the context of Pakistan or not. The idea is that at the end of this dialogue, we should at least lay down the basic framework, a basic foundation stone that can later develop into a roadmap that all of us as stakeholders, be that from academia, from government, from NGOs, from development institutions, can come together and follow through on, so that we are on the same page when we are working towards fostering and harnessing the demographic dividend of Pakistan. I would like to now initiate our proceedings by inviting Dr. Jonathan Eddleton for welcome comments. Dr. Jonathan Eddleton was interestingly born and raised in Pakistan. He has a PhD in international relations from Tufts University, and he was 5 times the mission director of USAID, and he's the former US ambassador to Mongolia. So I'll pass the mic on to Dr. Jonathan Eddleton now. Thank you. Thank you very much, Khushamdeed. Welcome. Very happy to have everybody on the campus. I will say a couple of things. I very much appreciate Dr. Vikas and his team that have organized this. I think I get invited partly because my academic work was on migration. I don't think I qualify fully as a demographer, but it did get me into some of these issues. And so I always appreciate coming back here. It is a partnership, as shown at the top. I guess I'll especially acknowledge UNFPA, sort of have been involved in the international organization, work for many years. I've always appreciated UNFPA, and then to be here at Foreman, I'm almost about to complete my 5th year here, and so I appreciate that a lot. I was just going to say just a couple of very small things, especially for people that haven't come too often to the Foreman campus, maybe even the first time, but we really, I think of ourselves as a village of about 10,000 or 11,000, about 9,000 of them are students, the others are faculty, staff, and their families. I tell people, we were just talking a minute ago, that we want this campus to reflect the best of Pakistan. We want it to break stereotypes, and the best of Pakistan means that it is a diverse place with many faith communities, many parts of the country, many socioeconomic background. People come from that, so again, I welcome it. But of course, above all, it's a university, and the university, things like this are the guts of a university, bringing people from different expertise, different backgrounds together to talk about issues that are absolutely vital to Pakistan. I'm sort of doing a quick calculation in my head, and maybe I'm wrong, but I think the population of Punjab alone is somewhat less than Russia, somewhat more than Japan. So it's a huge population, and what happens in Pakistan, in Punjab, matters for Pakistan, but not just for Pakistan. I think it's fair to say that it matters for the world as well. Again, thinking of the diversity of communities, and because it's fresh on my mind, we had the entering class, and we have both a college, intermediate, and a university. The college class, as it happens, is the biggest ever, which for us was 2,200 new first-year college students. Maybe that's part of the demographic aspect of Pakistan too, that this young people is entering. But I will say, I think this is a good story in the sense that they're coming to an institution of higher learning, and that education part. I think a lot of what's in the material is certainly the importance of education and health as social sectors. And the foundational part, of course, is the jobs and the economic aspect that goes to it. But our overall class did include, and I'm proud to say this, did include 4 students from the Kalash Valley, which is one of the smallest minorities in Pakistan. But it also includes, and people reached out to the Kalash Valley from the other northern areas, so a steady stream from there, from the border areas, even from the south of Pakistan. So while we are very much an institution rooted in Punjab, and most of our students come from Punjab, all parts of Punjab, we also reflect, I think, again, at least we strive to reflect something of Pakistan at its best.
Maybe a couple other things just to say, because these issues affect lots of things. And many people are from an educational background too, but strive to be a green campus. We're almost 100% solar, and we have some other interesting recycling initiative underway and other kinds of things too. So I think above all, though, it's the topic today that's important. The fact that people come with a high background, maybe sometimes with differences of opinion, but certainly a willingness to discuss and see what happens. I think it's interesting. Last thing to say, as I was walking over here, I was telling my wife, I said, we're 2 weeks into the new semester, and we've already had a number of conferences, workshops, activities, seminars. There's one a couple of days from now. I want to say it's the 7th Sociological Conference on Marginalized Communities. And it just so happens that the theme this year is as a marginalized community actually is aging Pakistan. And even while we talk about the demographic dividend, which in some sense focuses very much on that young people and the difference they can make, at the other end of the spectrum, and of course I'm entering that area myself, is the aging population, and it is often a marginalized community during some of these economic transitions as well. I guess this just says that in these kinds of themes, there's multiple moving parts, and it's important to have some insight into all of them as you move forward. So again, very much appreciate everybody's presence today. Very much appreciate, Dr. Vikas, what you've brought to this, but also everybody that's here and the discussants and the panelists, everybody here. Thank you. This is a vital theme, and it's gratifying that in this particular case, Foreman can partner with groups like UNFPA and have a discussion like this. So thank you, Shukriya. Thank you very much, Dr. Edelton. And you make a very good point. I've often felt that the FC population is a good representation of the Pakistani population because of our outreach and scholarship and financial aid programs. I would now like to invite our partner and almost the lead in this entire initiative, Ms. Tania Durrani from UNFPA. Ms. Tania Durrani is a development professional. Her area of specialization is GBV, and she is also the technical consultant and specialist for UNFPA in Punjab. Over to you, Ms. Tania. Hello. Oh, thank you so much. I'd like to welcome everyone here today on behalf of UNFPA and just extend a lot of appreciation to all of us and all of you. Welcoming our government counterparts. We have academics, of course, academia, development partners, and definitely many senior experts around the table. A very special thanks to the Planning and Development Board. Our CE Chief Economist will be joining us shortly. Other distinguished guests, and of course, Dr. Jonathan Adelton, Rector FCCU, Ms. Dure Nayab, for your efforts in the document you've prepared for today, and definitely our Population Research Center, which we've been supporting, so Dr. Vikas, and our implementing partner, Sajid Saab. I'd also like to mention and appreciate the generous support of the Netherlands Dutch government. They have been our donor for today's initiative. I'd just like to start by mentioning a few points about UNFPA's mandate. We are working globally, and we have been in Pakistan for 50 so years, advancing sexual reproductive health and rights. Our work is guided by 3 transformative results, and that's to end the unmet need for family planning, end preventable maternal deaths, and also to end gender-based violence and harmful practices such as child marriage. So we are focusing on several thematic areas: reproductive health, family planning, GBV, adolescents and youth, population and demographics, and humanitarian response. And we deliver these results through a 3-pronged 3 strategies: evidence generation,
institutional strengthening and capacity building, and events such as today, which is a culmination of all of this advocacy and policy dialogues. With the main purpose, through a rights-based, inclusive, and survivor-centered approach, we are ensuring that no one is left behind. So definitely ensuring that women, girls, adolescents, youth, and persons with disabilities are accounted for and considered in all of our work. I'd just like to give a little bit of background. I'm sure my colleagues will be mentioning it in more detail. But regarding the D4D, Data for Development program, this UNFPA has spearheaded with the STPI, and it's a first of its kind in Pakistan. It's been rolled out in other provinces, and we're at various stages there. But in Punjab, we are sort of, getting off the ground, you could say. It's a cornerstone of program and policy design. And we're emphasizing data as the backbone of all effective policy and investment, strengthening data governance frameworks, and building institutional capacities, and ensuring that evidence is sort of underpinning all of our efforts in the province. A central objective of the D4D has been to establish the Population Research Center. Dr. Vikas, we've been working with for several years, and we've done the same. We've established PRCs in other provinces as well, so at NUST and IBA. And for today's effort, we are sort of partnering and taking leadership from the PND board as well as we've been working with the Punjab Bureau of Statistics under this program. Just highlighting, and I'm sure many of you experts around the table would know, but just for context purposes, Dr. Vikas also mentioned, we know that it's more than 60% of Pakistan's population is under the age of 30, and over 50% are of working age. So that's the potential demographic dividend. Pakistan still, unfortunately, is struggling to harness this potential because of various different reasons, right? Health, education, skills, jobs, governance, and gender equality. So we have 23 million children out of school and limited access to vocational trainings. Pakistan's demographic window is projected to close by 2050. Punjab, as our rector has also mentioned, is very pivotal, right? It's beyond 50% of the country's population, and we have the largest share of the working age population, with 127 million alone just in Punjab. Youth are Punjab's greatest assets. We've already started discussing that, and I'm sure we'll continue to do so. But without them, without urgent investment, the dividend could turn into something not so positive. So I'd like to highlight that UNFPA remains committed to work closely with academia, with the PRCs, with the relevant stakeholders of the Punjab government to inform and support youth, both boys and girls, and related initiatives and policies of the Punjab to ensure that youth are healthy, skilled, and knowledgeable, and we create pathways to decent work and entrepreneurship and empower youth as active agents in decision-making. Just in closing, I'd like to thank the continued support of the PND and continued engagement, especially under the D4D program. Going forward, just mentioning that UNFPA remains committed to this cause for a more demand-driven youth agenda, and just highlighting a few key priority areas. We'd like to continue to collaborate on the development of the Punjab Youth Vision 2030, also undertaking the youth impact assessment of all public projects and profiling youth need assessments to serve as a baseline for designing youth-related initiatives. I really would sincerely like to appreciate all of our esteemed panelists sitting with us today and our experts whom you'll be hearing from different points throughout the program. I appreciate the efforts of PRC, Dr. Vikas, for your leadership today, and definitely our implementing partner, SDPI. UNFPA stands ready as a technical partner, working with the Punjab government to turn its youth potential into a true demographic dividend. I look forward to hearing from everyone's contributions, comments, and thoughts, because really, this is the opportunity to help guide what we are trying to achieve. So thank you so much to all of you for being here today, and looking forward. Thank you. Thank you very much, Ms. Tania, for your thoughts.
I think your excellent words really allow us to segue into the event that is sort of the linchpin of this entire policy discussion, which is Dr. Dure Nayab's excellent action plan. Allow me to introduce Dr. Dure Nayab. Dr. Dure Nayab's area of specialization is health, demography, class structure, age structure dynamics. Dr. Nayab holds a PhD from ANU in Canberra and an MS from the University of Adelaide. Dr. Dure Nayab will now present the main tenets of the action plan that she has developed. After her presentation, we will then have an open discussion on 3 particular issues that were streamlined and are in your concept notes as well. These issues are: how ready is Punjab to harness the demographic dividend, especially in terms of employability of youth and job-led growth in focus, and combining it with a discussion on policies of saving more and investing better. The second issue that we will be discussing is how can the province better align its public expenditure with the goal of benefiting from its youth. And the third discussion will be on what are the possible venues of resource mobilization to finance this agenda and how they can be tapped in. So we'll have a 20 minutes, 25 minutes discussion on each of this topic. It will be an open forum. You'll just raise your hand and I will take your comments in order. I would also like to mention here that we are lucky enough that we will be joined by the chief economist of PND, who is en route. And whenever he comes in, we will also include special remarks from him. And also right after Dr. Dure Nayab's presentation, I will take special comments from Dr. Nizamuddin, who has been kind enough to join us at such short notice. Thank you very much, sir. So without further ado, over to you, Mr. Dr. Dure Nayab. Thank you very much. Thank you for having me here. Good morning. Assalamu alaikum. To start with, I mean, this action plan is not something coming out of my mind. It's a result of a lot of consultations, including a big one we had in Lahore. Ms. Tanya was there as well. We had stakeholders from ministries, from academia, from development partners. And what I'll be very, very brief because I would like to get your views on it. And hopefully, this is an action plan, which is a product of the previous consultation. And we just hope that when we leave this room today, we have some sort of a policy framework. I mean, how these actions can actually translate into policy, into implementable policies that actually work and that are even possible. I mean, coming from academia, just maybe at times we are saying things which are not possible. So, I mean, that's exactly why we want people from the ministries to participate. I first worked on demographic dividend some 20 years back, and the title of the paper was Demographic Dividend or Threat in Pakistan. I mean, as the title suggests, I had my apprehensions that maybe, just maybe, this potential that demography is providing us would not materialize as a dividend and it would be a threat. And a few months back, I thought I should revise this paper. It's 20 years. And sadly, all the policy implications in that paper are valid even now. We did not work on them. The numbers have grown, but the issues remain there. I mean, the very basic numbers coming from the latest census, Pakistan population has grown much faster than we thought. And Punjab too has a growth rate of 2.53. It's much faster than all the projections we had. And being more than half the population of Pakistan, if we can just get Punjab right, imagine half the country is fixed. Punjab has the potential, but I mean, every province has the potential, but this potential, I think it's time that we actually materialize it. This unutilized potential, it's 75 years, more than 75 years now. Pakistan mein
बहुत पोटेंशियल है. आई थिंक उस पोटेंशियल को ना अब पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनने की जरूरत है. उस पोटेंशियल को दिखाएं. सो मोर देन हाफ, if you fix Punjab, half the country is fixed. And I mean, agar aap growth rates dekhen, to Punjab is growing faster than even KP. I mean, I have a little doubts about these figures, but still, it's a growth rate that is well beyond everyone's expectations. When we talk of demographic dividend, more than the total numbers, the thing that we have to be more concerned about is the age structure. Demographic dividend is about age structure, not just numbers, it's about age structure. What does the potential for demographic dividend mean? That you have more workers than those who are not in the working ages. This is Punjab. The working age is 58.3%. Young, 38%, and the elderly, 3.9%. And let me clarify here that when we talk about demographic dividend, it's not just about the youth. You have to take care of all these ages for the demographic dividend to materialize. I mean, Pakistan is still stuck in the first demographic dividend. Now we are even talking about the second demographic dividend. If you reap this, the investments, the savings, they are going to give you a second dividend. And since Pakistan is still in the younger age structure, I mean, if you look at urban, it's 61% in the working ages. In rural, it's 56.5. Why is that? Because fertility is still higher in rural areas, and 0 to 14 is higher in rural than urban. So this is what all the policies should be about: the young, the working ages, and the elderly. The whole idea, as I said, about demographic dividend is that there should be more income than consumption. I did this whole calculation by at every age. It's a very complicated methodology, but just this one graph tells you, I mean, the blue line is consumption and the rust orange one is income. For the first 9-10 years, people are just consuming without producing. I mean, partly because they are not supposed to produce at that age. And secondly, our data is, I mean, somebody can say that there's child labor in Pakistan and they are earning something, but our labor force data, our PSLM data, it does not cover ages under that. So in any case, I mean, even if they are producing, the income is very, very small, they are consuming. And then there is a surplus in late 20s, which goes up to a little over 60. The surplus, I did this calculation for every province. It's there in the paper as well that is circulated and everyone has it. This surplus should be much, much bigger for Pakistan to materialize the demographic dividend. जो gap है between the blue line and the orange one, ये बहुत कम है as compared to if we actually want to make use of the larger workforce that we have right now. The countries that have, and let me tell you, I mean, this whole idea of demographic dividend came as a hindsight. I mean, Korea progressed, and when they tried to analyze the factors, there was a missing factor, and they couldn't figure out why is this happening. And this found out that it's because of their age structure. And that's where this whole idea came from. We already know. I mean, they didn't know, but they had the right policies and it worked for them. We know this for the last, I mean, almost 20, 25 years. And this window is still now 2050 because our fertility rates haven't gone down. So this window is extending, which again is not a good thing. But since we didn't make use of the first 20 years, the additional 15 years, we have a window.
The basic aim of demographic dividend is to increase this gap between consumption and income in the working ages so that there are more investments, more savings that can be used to boost the economy and also finance when the population goes towards aging. I mean, in Pakistan, he talked about aging. I said that in Pakistan, aging is a very complex phenomenon because we aren't an aging country. It's still a young country, like half the population. It's still median population is 22. So it's a very, very young country. The proportion of the elderly is not increasing. It is increasing, but not, I mean, as if we talk about East Asian countries or anything, but the numbers are, which makes, I mean, you have a lot of young people and you also have a lot of elderly people. So the policies should go across the whole age structure. And the surplus that you produce in the working ages is what you are going to use when the population is old. After the consultations, which I had in all the provinces, including Lahore, this is the basic framework that came out. So, I mean, after the consultations, this is the framework. We have the demographic structure there, but for this demographic structure to be a dividend, the 6 key areas that need our attention and the right policies are education, health, labor market, economic structure on the whole, governance, and societal norms. Societal norms are something that do not appear in most of the frameworks, but they are very, very important. I mean, the stereotypes existing in the society, the norms that exist, that do become a barrier for all the other 5 areas. Before I get to those 5 areas, these factors also overlap with the SDGs. Pakistan is a signatory to the SDGs. If you work on to achieve the SDGs, SDG 4, 8, and 10, you are going to reap the demographic dividend as well. And if you are focusing on the demographic, the factors affecting the demographic dividend, well, energy also is a governance issue. I can continue, seriously. There you go. फिर थोड़ा टाइम लेगा मैं I can continue. I mean, If you feel like it, you can huh. I mean, the six areas that I identified to translate the demographic structure for demographic dividend. The first was education. That links to, I mean, it's not just education per se. It is
quality education, skill development, and reduced inequalities in education. I mean, every data we see gender inequalities, we see regional inequalities, and these correspond to SDGs 4, 8, and 10. Then health, the general well-being of the population, mental, physical, and in this, I mean, clean water and sanitation as well, but also maternal and child health, which are a huge issue in Pakistan. I mean, the infant mortality rate in Pakistan is just too high. And being a demographer, I can tell you that fertility would never go down unless your infant mortality goes down. It's always mortality going down first before a fertility decline. I mean, if we compare figures of infant mortality of Pakistan with India and Bangladesh, I mean, we present a very, very depressing picture. Maternal mortality is still very high. And these correspond again with SDGs 3 and 6. Labor, not just employment, but gainful employment. One, decent work, which will lead to economic growth. Decent work, here the concept is not just, I mean, for economic growth, but also for the growth of the individual, corresponding with SDG 1 and 8. Economic structure. This is, I mean, these issues cannot be treated in isolation. All the factors have to go together. I mean, that's why the role of the Ministry of Finance becomes very, very important. Like I said, savings are important. Are we providing tools for saving in Pakistan? Where do people invest, even if they have money? What is the fiscal policy? How much money is being allocated to health, education? What is, I mean, like employment is a huge issue. I said that gainful employment. I think one of the biggest issues in Pakistan right now is unemployment. And even if people are employed, are they gainfully employed? I mean, I'm not going to go into those figures, but I did a calculation and I said that people are suboptimally employed. It's not gainful employment. So is the economic structure something that is creating jobs? Is a regulatory framework one that is enabling the system to provide jobs? This, and it corresponds with SDG 8 and 10. Then governance, the strength of our institutions. Are they engaging youth? Is, like I said, even the energy issue to me is a governance issue. We have the electricity, but still we keep getting these outages. Why? Because of the strength of our institutions. Is the justice system there to back up the policies, whether they are fiscal policies or the strength of the institutions, corresponding with SDG 10 and 11. Then the societal norms. I mean, if there are any sociologists here, I think they would agree with me that unless the norms, the mores, the traditions governing our society are one that back all these other 5 areas, a society, a country cannot develop. We talk about women empowerment, we talk about gender equality, even the inequalities in different ages. What are the norms? I mean, I usually say that just look at the advertisements that appear, even the government advertisements that appear in newspapers. They are promoting the same stereotypes. A boy running a marathon, a girl, a small girl being protected by parents, getting married. Why? Why are we pushing these stereotypes? So these norms have to change. And unless these 6 factors all work together, the demographic structure is not going to change into demographic dividend. Next slide, karte. So summarizing these, I mean, the 3 factors which help any population to achieve demographic dividend are the labor supply, which we, in numbers, we have.
The numbers are there, but is that labor skilled enough, equipped enough for the 21st century? Do they have the skills? Human capital, I mean, like I said in the previous slide as well, we are educating our youth, but the unemployment rates are much higher among the educated people than the uneducated ones. And just last night at dinner, there were people from different universities, and they said that the enrollment rates have gone down this year. And you can, I mean, make out why did that happen? I mean, if education is not improving their life, I think it's a very logical decision. Do we have the skills? Do we have the education? Do we have the health? Human capital is all that. And then savings. Savings is something we don't really talk about, but savings are very important at the individual and at the national level. We need savings. For demographic dividend, savings are a must. The whole idea is earn a lot, save a lot. That's where, I mean, savings, when you have a surplus, you invest, you save. So these three factors, I mean, I would really like all of you to tell the exact policies, workable policies that can lead to all this. Education and skill development, preparing a future-ready workforce. I mean, even the workforce, I mean, the people usually say, oh, we can send our workers out of the country. I don't think anyone will have this unskilled labor force. Ensuring health, all ages and all sexes. Why I'm saying all ages? Young, working ages, and elderly. Labor market, employment as a driver. You need to create more employment. Institutional strength and governance, youth engagement and empowerment is something very, very important. I mean, I did a survey and very few young people were socially engaged. They were not part of any body, any setup. Economic policies and fiscal management, I've already talked about, and savings, I've stressed a lot already. I'll just end with these words of Nelson Mandela. A nation's greatness lies not in its riches, but in its ability to unlock the potential of its people and turn dreams into deeds. Like I said, we keep talking about the potential the youth have, the potential Pakistan has. It's time that that potential, those dreams are changed into deeds. Thank you. Thank you very much, Dr. Duranaya, for this very informative presentation and for ending at such a positive note. Ladies and gentlemen, we've been joined by our chief guest, Mr. Mohammad Masood Anwar. He is the chief economist at the Planning and Development Board. So since he has to leave, we will be inviting his comments right now. So, sir, before further ado, I'm handing over the mic to you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. It's really an honor for me to talk about an important subject, which is a population. If we look at the Punjab's population, we have 127.7 million people in Punjab with a growth rate of 2.53%. So if we are pacing with this growth rate by 2030, will be doubling the population. There is one side that is its benefit. If properly utilize this youth bulge and the population, we can have a better impact. But if not channelized, there are the other sides also.
If we look at the per kilometer density of the population, it is approximately 624 people per meter square, per kilometer square. And the average household size has gone to 6.43 now. Youth bulge is approximately 33.23 per million people are youth, which is approximately 26% of the total population, ranging from 15 to 29 years. This is the youth which can be turned into a capital. But there are certain prerequisites for utilizing this capital: education, health, infrastructure, services, and above all, the opportunities for the future. If we look at the literacy rate, it is approximately 66%, with female 72% and male 72% and female 60%. So there is a difference of gender in the overall literacy rate also. 9.6 million children are out of school in Punjab, which is 27% of the total population. So it's a huge number, which requires our attention. Skill mismatch. We are providing the education which is not matching with the needs of the country. Unemployment, labor market, 6.99% of the total youth bulge is out of employment. And out of this, female is 8.32%. And if we look at the urban side, it is greater than the rural side. 7.94% of the youth is out of employment in the urban areas. Highly educated female face employment also. 23.5% of the educated female are unemployed. So this is again an alarming. The recent mixed data suggests that if an educated female is the mother, the IMR and MMR rate is reduced. So this has a direct impact upon the health of the family. What needs to be done if we are going with the present pace and the resources available with us? We have approximately 227,000 schools in Punjab. And what more is required, in addition of 33 million of school-going children, is 30,000 to 50,000 new schools in Punjab. Higher education requires 300 additional universities to cater for the current demand. Healthcare, we have 1.1 per 1,000 people doctors availability, while WHO standard requires 2.3 doctors per 1,000 people. We have 20,000. We need additional 20,000 hospitals, 2,000 BHUs, 5,000 RHCs, and 300,000 additional hospital beds are required. So this, I'm talking of the current population requirement. If we are moving with the current pace by 2030, this is the total requirement which we are foreseeing in the near future. Same is the case with the water supply, sanitation. Although we have 94% people having access to the drinking water, but only 36% have accessibility to safe drinking water. So what about the rest of 64%? Sanitation, 68% have access to sanitation. 32% lacks sanitation facilities. This is fundamental to health, hygiene, and nutrition. Wastewater, 38% is only treated. The rest goes untreated. Water stress, we have 930 cubic meter water available per capita per annum, while international requirement is 1,700 cubic meters.
By 2050, our population will be 350 million. So what needs to be done in that regard? It's a major policy shift on our side is required. Demographic dividends are there, opportunities are there, but without harnessing this potential, we cannot have the better impact. We need to have youth-driven economic diversification and innovation policies. There is a large domestic market and international market available. But for that, we need to train our people, educate the youth. High saving and investment employment can be generated. Tech adoption and entrepreneurial growth is required. There are risks also if this youth is not properly managed. Unemployment is leading to social instability. We're already facing a lot of issues, law and order, economic, social issues. All are associated somewhat with the unmanaged population. Resource depletion, that is also threatening in terms of food security. The recent flood and floods have demonstrated the impact. And we will shortly be seeing that impact of the environment upon our society also. It's an economic loss on the one side, but on the other side, the social problems will arise out of this situation. So we'll be having some idea of the future planning in terms of environment also. Persistent poverty and inequality will be a threat if we are not managing the population properly. Wasted human capital potential, though we talk a lot about this human potential, but if not channelized, properly targeted, and properly trained and educated, this will be just a crowd of people and nothing else. We'll be spending more upon these people in terms of managing their day-to-day issues, rather than looking something out of good from these people. So it's a time to look into this demographic potential, and we need to align our policies. Although the current government is cognizant of all the issues, challenges, but the resource remains the basic issue. And the long-term policies need to be implemented. We try to get results in a few days' time, but it's not possible. Population, I was sometimes back talking about this population control, and somebody from the health department, a specialist, was telling me that if we control the population, the first impact will come after 20-25 years. The momentum will go on until 20-25 years, and afterwards, the reduction will start, or we'll be able to manage the population. So sooner or later, we'll have to make a decision. We have to control the population. We have to manage the resources. We keep the population aligned with the modern requirements. It's a high time. And I think the effort which the management has done today is commendable. We need to come out with some kind of a policy recommendation so that government could be focusing on these recommendations and aligning itself accordingly. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for sharing your thoughts with us. There were many key takeaways from your talk. You gave us a good idea what development we need to do to manage the population that we have now. You highlight the fact that the strategic policy and strategic investment that we need to harness the demographic dividend in the future. But most importantly, as a sociologist, to me, you raised 2 points that were very close to my heart, that we are unable to leverage the resources that we already have to provide quality services.
which is the mismatch of skills between what universities and educational institutions are teaching and what is required in the job market, and the gender parity that even hits the educated women in Pakistan. Ladies and gentlemen, as a side note, I'd just like to make an honorable mention. We have been joined by Ms. Mavis Hayat. She is member Punjab Assembly, and she is a member of the Population Welfare Committee. We are now going to have an open discussion, basically divided into three main themes on the action plan and its feasibility for guiding a roadmap for reaping the demographic dividend in Punjab. Before I begin the first theme, I would like to invite Dr. Nizamuddin, who is a demographer of note and of national fame in Pakistan, to please share his comments on the action plan for reaping the demographic dividend and its relevance for Punjab. Inviting me to this dialogue, and thank you FCC University and Director and the Population Research Center. I'm these days having a hat of higher education sector for the last 20 years, but my life has been spent in population studies. To me, this is a very old debate, not new. Started in 1990s. With Asian tigers, South Africa, South Korea, Indonesia, Singapore, Malaysia. They at that time talked about demographic dividend because fertility was declining, and they realized once fertility declines, the numbers will be reduced. So the investment on health, education, food will be reduced. That saving could be invested on young people's development. They will give you the dividend. The concept of dividend came from that era of 1990s and 2000. So to me, it's an old debate. My friend, colleague, Pranayab is a demographer, very well-known demographer. She produced the same discussion. But when we talk about action plan, action have to be real actions, not polemics, not suggestions what we should do. Action means 1, 2, 3, 4, 5. For that, you need to have structural understanding. When I teach in classes, I talk about structural problems require structural solutions, not slogans. Let's see the structure. Our population, we say, is very young. Yes, it is. But by the way, our aging population is also growing. You will hear it 3 days later. There's a conference going on here, aged population. It's growing, not declining. Growing slowly, but growing. Growing in size, much larger, in proportion, smaller. The question is, what do we do with, how do you get demographic dividend? Idea is very good that use the youth population to make them active participants in labor force so they can contribute to the economy, and then you will have economic growth. But the question is, how do you do it? And what are we doing for it? This is a known fact. Apart from demographic dividend, it's a known fact that we should provide job opportunities to our young people. We have universities, 247. We have hundreds of colleges, schools, but still we have 300 million out of school children. It's a shameful thing for Pakistan to be in that category. 300 million out of school children about Pakistan. We have organizations like TEFTA, NAFTEC,
The big ones, they're asking, they're telling we are producing so many trained, skilled people. When 10% are employed in the market with the qualification they're giving to students. DEFTA graduates are not employed. University graduates are not employed. Highest number of unemployed population is degree holders. The question we have to ask, what are we doing for human development, for human resource development, for the young people? We know these facts all along. It's nothing new. Just increasing, but the facts are there. Our universities have not reformed. Our colleges have not reformed. In fact, we have developed a new group called LEFTEC. They spend billions of dollars, rupees every month, every year. I have been benefiting myself as a college. I took 5 trades, trained them 20 each in each batch. Believe me, they are free of cost. They just come and go, no learning. And certification is given by LEFTEC. I've been realizing in the higher education sector, the skill development is the key sector, not vocational training. The skill development, the skill level force you need. What skill you need? Not NAFTAC, not DEVTA, not university degrees. They are not skill development. University degrees are producing large number of unemployed graduates. So what is the problem then? The problem then, we are not keeping up with the global market, with the national market. And every person in Pakistan, whether it's a governor, each chief minister, many large NGOs saying we are developing skill development. We're giving 3 months training program free of cost. None of them are giving them any skills that can be hired or used. The conclusion we have reached in the higher education, at least in my group, neither the universities are preparing our young people for job market, nor the colleges. The quality is worst. We talk about access is low, but thank God we have access low, because the more you have graduates, the more unemployed they will be. Question then will be, what a structural change we need to make. We are sitting in a university which is giving degrees. You can say better qualified degrees than others, but still degrees. Degrees are not acceptable either here nor outside. Then what is the problem? What is acceptable is internationally acceptable skill development certifications. Unless you have those certifications, you will not get a job. We heard 25 years ago, Microsoft Office was more acceptable than a Bachelor of Computer Science degree. If you have Microsoft Office certification, you will get a job. But if you have Bachelor of Computer Science, you will not get a job. Same situation today happens. The question then we have to ask, where are we preparing these young people for? And how will they contribute to economic growth if they're not employed? So it's a serious challenge for the entire structure of Pakistani society, including all sectors. The chief economist, planning commission, name it. Everybody had that challenge to deal. So I think we should think about concrete proposals, how to overhaul, restructure, and give up what you should do with the universities, training colleges, skill development programs. How can they revamp them so that we can prepare a young population which is employable? Okay, time up. Go. Thank you very much, sir. We could sit here and listen to you all day, and I have listened to lectures from you. We are just very short on time because we started a little late. So thank you very much for your comments. 2 honorable mentions. We have been joined by Ms. Shagufta Faisal, who is an MPA, and Ms. Samreen, who is an MPA. So, ladies and gentlemen, we are now moving on to the most interesting part of this event, which is the panel discussion. So, the floor is open for open discussions. ये एक bilingual session होगा, whatever you're comfortable with. सिर्फ request मेरी इतनी है कि if you raise your hand and get called in, तो please 1 से 2 मिनट के अंदर अपने comments खत्म कर लीजिएगा. जैसे कि मेरे उस्ताद साजिद साहब ने फरमाया था कि जब आप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लेंगे, तो ये सोचिए कि आप अपने साथ बैठे हुए साथी का वक्त ले रहे होंगे. So please bear that in mind. हमारा जो आज पहला discussion point है, after looking at this or hearing, having a presentation of this action plan, is
how ready is Punjab to harness the demographic dividend, especially in terms of employability of youth, job-led growth, and making policies that allow us to save and invest more strategically. So the floor is open. Please. Thank you very much for joining us. And it's a pleasure to have you in the subject here. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shugufta Faisal, MBA, and I am also an Islamic calligrapher. My calligraphy top 5-0 in Islamic Art Society, as well as I am Women Empowerment Chief Coordinator of National Best Nation Welfare Organization. This is a very honorable for me to इस मौजू पर मैं बोलूं, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है क्योंकि बड़े इंटेलेक्चुअल और लोग बैठे हुए हैं. तो जो हमारी आबादी है, यूथ की जो आबादी है, ये हमारे लिए एक चैलेंज नहीं है बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. और इसी अपॉर्चुनिटी को हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज जो शी इज़ टेकिंग वेरी सीरियसली और इनिशिएटिव स्टेप्स, बड़े उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर और उन्होंने इस पे बहुत वर्किंग आजकल हो रही है इस पे, और इसके साथ साथ इस पे काम भी हो रहा है और प्रैक्टिकली काम हो रहा है. जैसे उन्होंने ऐसे पावरफुल इनिशिएटिव लिए गए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने हाल स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अलावा लैपटॉप स्कीम्स हैं, प्लस इसके अलावा आईटी सेंटर बनाया जा रहा है, नवाज शरीफ आईटी सेंटर, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का तो नहीं, पूरे उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बहुत उसको शो करवाया जाएगा, जिसपे वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी यूथ को रिप्रेजेंटेशन के लिए. इसके अलावा आज पंजाब की जो हमारी यूथ की जो है पॉपुलेशन है वो मोर देन 60% है. और ये जो आपकी ये डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये हमें 2-3 दहाइयों से ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो हमें 2-3 दहाइयों के बाद मिला है. और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने आप को, अपने यूथ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, नेशनल आर बिल्ट नॉट बाय their sources but by the visions and energy of their youth. और इस पे जो काम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इंशाल्लाह ताला. जैसे जैसे का वक्त गुजरता जा रहा है इस पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और आप भी हमें इस पे हाईलाइट करें. हम इंशाल्लाह ताला इस पे ऑन द फ्लोर भी बोलेंगे और इस पे जितने भी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं वो लिए जाएंगे. और अब आपको पता है नौनिहाल जो स्कॉलरशिप है वो फेज़ 2 में दाखिल हो चुका है और इस पे बहुत अनप्रेसिडेंटली वर्क हो रहा है. और सीएम पंजाब और उनकी जो टीम है उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इससे किया है और इंशाल्लाह ताला वो इसके लिए बहुत पुरअज़म है और मजीद इस पे काम होगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आपके कमेंट्स ने हमें अच्छा एक स्टेज से शुरू करवाया, बिकॉज आपने हमें ये बताया कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं ऑलरेडी इस बारे में. And I think it's the perfect government that can think of a 20-year solution that materializes eventually. Sir, you're next. Please go ahead. मेरा नाम अहमद खान है जी. I am the CEO of the Punjab Skills Development Fund. We're part of a new department set up by the government of Punjab this year, which is the Skills Development and Entrepreneurship Department. So, just the fact that we exist just shows कि जी ये जो current government है इसकी there is some thinking towards skills development. Lack of infrastructure in education is one of the primary reasons why we feel KG skills development might be a solution, because everyone's talked about the huge population and sort of the lack of out of school. आपने 300 million का I think शायद थोड़ा सा कम हो से, but the fact is this will hurt. So just to sort of highlight KG where the government's head is at. So one thing जो कि बहुत बड़ा focus है कि जी सर ने कहा कि all these people that we've trained and educated are pretty much I don't want to use the word useless, but
are not in the sort of workforce. So one of the things that we've started, at least in the last year, is कि जी impact and outcome focused training. ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? अब हमें जो है ना, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती जिसका एंड रिजल्ट डज नॉट लीड टू इधर एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, सो ये तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट कि जी जो पैसे आने हैं, हमारा पहले मेजरमेंट होता था कि जी कितने लोग ट्रेन हुए, अब है कि जी कितने लोग एम्प्लॉय हुए और जीडीपी में क्या फर्क है. ठीक है, सो दैट्स वेरी क्लियर. द अदर सॉर्ट ऑफ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि जी अब ये इंडस्ट्री लेड हो गई है. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जी वी आर एक्चुअली टेलिंग द इंडस्ट्री कि जी आपने एम्प्लॉय करना है, आप ट्रेन करें, वी विल फंड इट, आप ट्रेन करें, आप करिकुलम डिजाइन करें, आपको नैफटेक का नहीं पसंद, आप नैफटेक का ना ले, आप अपना बना ले. द कंडीशन इज कि जी सर ने जैसे कहा कि जी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. So whether it's CTH, whether it's Google, whether it's AWS, whether it's City and Guilds, so that's the sort of second sort of part of it, right? So impact outcome focused and then industry led. ये नहीं कह रहे कि जी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं कर सकते, बट लीड इंडस्ट्री को लेनी है. वो आगे से अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को हायर करना चाहते हैं तो बाय ऑल मींस. जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट का फोकस है, वो प्राइमरी एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स हैं. ठीक है, सो और एक्सपोर्ट लेड में भी सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस है. So export would mean your technology, IT, software, even textiles, but also the export of manpower. ठीक है, so वो सर की बात फिर से आ जाती है कि जी आप लोगों को जब इंटरनेशनली सर्टिफाइड स्किल्स देंगे तो then they are more likely to be employed abroad as well. We all know about the balance of payments issues and sort of our current account deficit. So the government feels कि यार if people can be employed outside, so but उसके अंदर then there's a huge aspect of giving them soft skills and giving them sort of non-cognitive skills कि वो जाके कोई मुल्क का नाम रोशन करें और वहाँ पे जाके जो मसाइल होते हैं वो ना हो. The other sectors that the sort of focus है वो are things like hospitality. There are things like climate के ऊपर काफी focus आ रहा है. जी क्लाइमेट, हाँ जी, और रिटेल सेक्टर. ठीक है ना, बिकॉज इवन दो ई कॉमर्स बढ़ रहा है, but retail, physical retail का भी काफी बढ़ रहा है. So I am going to stop there. Hopefully we'll get another chance to talk about it. Thank you very much. Ji, I want to comment on this, but Dr. Ali has raised his hand, so I'm gonna. No, please go ahead. Ji, and you're next. Ji, I apologize. After Dr. Ali. Just one of the things that strikes me about these conversations is how many times we've had them. And so it's important for us to A, account for what's happened in the past, and B, think about what we're going to change. Politicians often tend to focus on the promise of the future without accounting for the past. And bureaucrats often talk about inputs and not outputs. There's a fundamental accountability sort of institutional gap in accountability, not accountability in the sense that is glamorized as trying to find culprits, but accountability in the sense of holding ourselves to account after every little few time periods. I was involved in 2013 in the writing of the Punjab growth plan, the 5-year Punjab growth plan for 2018. And at the time, the demographer Zeba Sattar had done a lot of work in popularizing the idea of a demographic bulge. We were told that that is the time that it is ripe to train these people, that the opportunity will be lost if we don't act then. And the government claimed that in fact, they launched a program under which sort of the Prime Minister's youth training program, which was supposed to train something like 2 million people. And funds started flowing towards vocational training. My family runs a vocational training institute, and we saw funds come in. But at the same time, the government had not done its homework on figuring out whether the economic growth of 2013 to 2018 was sustainable or not. It clearly was not. We could have told them, we were telling them at the time that it was not sustainable. And when the economy crashed in 2018, all of those funds suddenly evaporated, and entire schools were shut down, jobs, trainer jobs evaporated, and we were set back, not just in terms of what we achieved, we didn't meet the targets of training, but we actually lost good resources that had been committed.
in the first place. So I'll make 2 points in closing. One is that any plans that you're thinking of today have to be done with some sort of rational, sustainable ideas about how an economy is created. And so there's a macro picture to it, which is your macroeconomy has to be rationalized, which it has not been done in the last 15 years. And two, at the micro level, organizations should first answer for what they've done in the last 5 years, and then tell us what they're going to do next. Thank you. Thank you very much, Dr. Ali. I completely agree that we need a system of accountability and we need to differentiate between growth and sustainable growth. I'll hand the mic over to you. Please. Much. My name is Sayyida Kulsoom Hai. I am DG Labour Punjab. So, of course, there's a lot been talk about employability and how to harness the dividend of the youth bulge and the young population. So employment is, of course, my subject, so I have a few things to say about it. We are talking about maybe, if you look at numbers, it was said that 9.6% million, I think, children are out of school in Punjab. I would dispute that figure because we had a survey called the Child Labor Survey of 2020. And the Labor Department carried on this survey with the support of UNICEF in 2020, like this is 5 years ago. And according to that survey, I think 23 crore, or I think 2.5 crore ke kareeb, bacha, they were out of school at that time. And I'm sure that the number has increased by now. So we need to understand the quantum of the issue first of all. The population is growing at a very large scale. The resources of the government are not able to match it. So we have a real issue in our hands. We are talking about only job creation. Maybe we are taking this problem in the wrong way, because maybe we need to encourage more entrepreneurship. Because we are always talking about industry not being able to employ enough people, or people not being employable enough. People getting degrees but not being able to match the jobs which are available in the market. So what we need them to do? We need them to become employers themselves. We need them to become a part of maybe a supply chain, or maybe a part of, become small entrepreneurs, producing some good. Because, what you need at the end of the day for the sustainable economy is to have enough income generation in the country, enough wealth creation in the country to, sustain the economy, So it doesn't need to be in terms of getting jobs only, being employed by somebody. It can be having a business. All over the world, we see people, the entrepreneurs and the small entrepreneurs, small and medium enterprises as they're called, they actually sustain the economy of many nations, most of the nations. So most of the people in the countries which are developed, who are developing very fast, are not actually getting jobs. They are becoming entrepreneurs. They are making products. Take the example of the IT industry. In my opinion, despite the fact that we have had a limited resource, allocated to it by the government, the IT industry is doing very well. But what are those children doing and those young people doing? They are not making, they're not getting jobs somewhere. They are making products, IT products. They're selling it abroad. We need, in my opinion, we need to have more linkages with the domestic industry and what the requirements are. I think that is lacking. In my experience, that is lacking. There is a disconnect between what the training institutes are training and what they are what the requirement of the job market. Thank you very much. Thank you. Excellent comments. And I think Dr. Duranaya's action plan covers SME very rigorously. Sir, I'll take your comment. We'll take 2 more comments before we move on to the next discussion question. Please go ahead, sir. Thank you very much. My name is Khalid Mahmood, and I'm
working as Director of Labor Education Foundation. So talking after you, ma'am, on the labor rights situation. I'll try to link this. Actually, I think the biggest issue in Pakistan is not that there is not enough wealth generated, but where this wealth is concentrated. The question of inequality in Pakistan. So if we are here collaborating with one UN organization, I think we have to take in account another UN organization's report, UNDP's report. Around $28 billion per year are going to subsidies towards the elite. That is another UN organization's report. Now, here, when we're talking about the health, education, and jobs, I think another important factor in Pakistan is the housing as well. Around 30 to 40% of the people who are working in the industry, their income is spent on the housing and utilities. That is a major factor when we talk with the workers in cities like Lahore and Faisalabad. Where is their income going? It's the housing and the utilities as well. The second thing that we're talking about the skills. Skill, when it links to the capital, private capital, we're not going to compete with the international markets because the infrastructure issues are beyond our controls now. If we are depending on the private capital to develop skills, this is not going to work. I think we have to change our perspective. It's about the rights of the people. It's about the universally acclaimed rights. We have been signatories to a lot of ILO conventions and UN conventions. The basic and universal social protection for each and every citizen of Pakistan is important. If we want to educate our youth, if we want to keep our population healthy, and if we want to reduce the medical bills, the basic universal social protection is important. Secondly, the voice to the people. These young people, if they do not get voice, and if it is not channelized, we are going to face similar situation what happened in Nepal or what happened in Bangladesh. I think it's important that the people who are working, rights are protected. They're given rights according to the labor laws and constitution of Pakistan, and freedom of association and collective bargaining is ensured at the workplace. That is going to channelize the energy, and that is going to motivate the youth as well to look forward for having jobs or entrepreneurship, but with some basic rights. Thank you. Excellent points. Firstly, to make quality of life accessible by providing people cheap utilities, having a functional social welfare system. And the last point about freedom of expression you make is quite nuanced. And I'll leave it at that. And I'm going to take my last comment from Madam Rukhsana. रुखसाना खोसर, डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट करना चाहूँगी जॉब और एम्प्लॉयबिलिटी एंड जॉब लेड ग्रोथ, जो कि फोकस होनी चाहिए हमारी फॉर यंग पर्सन और फॉर यंग पीपल। तो हमें जब भी पॉलिसी बनानी है, वी हैव टू कीप इन माइंड द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन्स। कुछ रीजन्स जो कि एग्रीकल्चर लेड प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और उससे रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो है वो उसी लिहाज से होनी चाहिए। कुछ इंडस्ट्रियल हमारे सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे उनकी जो रीजन्स हैं जो कि लाइक सियालकोट है, फैसलाबाद है, तो फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हम सोशल साइंसेस क्यों पढ़ा रहे हैं? हम क्यों नहीं कि उसके अंदर वही इनोवेशन लेके आते जो कि वहाँ के लोगों के लिए चाहिए। और वहाँ पे शायद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मजीद एक्सपेंडिंग करनी चाहिए, उसको उठा के किसी और एग्रीकल्चर लेड एरिया के अंदर लेके जाना चाहिए। फैसलाबाद चूंकि इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें। ह्यूमन कैपिटल जो है हमारा सबसे लो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। हम इंफ्रास्ट्रक्चर 1947 से लेके अभी तक हम इस स्कूल, अगर हम एजुकेशन के सेक्टर को देख लें तो स्कूलों की रिवैम्पिंग हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन कभी भी उसके अंदर वो चीज़ें इन्वेस्ट उस चीज़ पे नहीं किया गया जो कि स्टूडेंट्स और हमारे जो यूथ है उसको ज़्यादा स्किलफुल बना सके। हमारे फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो इनफॉर्मल के अंदर
उससे वो इतना ज़्यादा हम गेन नहीं कर रहे। कोई भी चीज़ जो है वो हमने उसके साथ रिलेट नहीं की हुई कि हमारी डाइवर्सिटी और इसके अंदर यूथ इंक्लूजन और इक्वालिटी की जैसे बात की, अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। इसमें जेंडर एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम फीमेल के लिए जॉब क्रिएशंस और उनके लिए वो एनवायरनमेंट नहीं कर थैंक यू वेरी मच मैडम रुखसाना। और आपका जो पॉइंट है वो काइंड ऑफ लूप्स बैक इनटू जो डॉक्टर दुरैना आप कह रही थी कि हमें नॉर्म्स में चेंज की जरूरत है, वी नीड कल्चरल चेंज आल्सो। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे वैलिड रखे गए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत, यूटिलिटीज़ फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत, सोशल वेलफेयर के निज़ाम को बनाने की ज़रूरत, इन सारी चीज़ों के पीछे दैट टेन्यूअस वर्ड बजट आ जाता है। सो जो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज बेसिकली हाउ कैन वी बेटर अलाइन आवर पब्लिक एक्सपेंडिचर विद द गोल्स ऑफ बेनिफिटिंग यूथ। किस तरीके से हम अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं इनटू आवर फ्यूचर, इनटू आवर यूथ। द फ्लोर इज ओपन। Thank you. I am Sarmad from BNU Center for Policy Research. हम बहुत ज़्यादा कई चीज़ों के बारे में कहते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, यूथ को डेवलप होना चाहिए, उन्हें उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए और एट द सेम टाइम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करना चाहिए. But there is a cost associated with the utilization of that demographic dividend, which is an ecological cost. Because when that demographic section of the society changes into a middle class consumer, the consumption rates are going to rise. And it is going to lead to a larger economic carbon footprint. And Pakistan is already the 6th vulnerable country to we should be cognizant of that. I think you make a very good point. What is the cost of development and कार्बन फुटप्रिंट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. मतलब हम दुनिया की हरकतों की वजह से सफर ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कार्बन फुटप्रिंट तो हमारा कुछ भी नहीं है. So just a small comment, if I may, but it is a trend that we are following, and the whole, I mean, even US has been following, other countries have followed. I think you make a very good point, and I think since we are at the stage of developing these policies, we can build in fail safes in them कि उसकी जो भी environmental cost है उसको हम curb कर सकें. I do apologize, ladies and gentlemen, I'm gonna veer the discussion back to budget. And talking about or sharing ideas about how public expenditure can be rechanneled to strategically invest in the future of youth. Please go ahead, madam. And then. So I would just like to tell the gathering what the government is doing. We are basically, the strategy should be to have more development, human development schemes. Now, if you see the ratio, and the PND representative has left, unfortunately, otherwise I would have talked to him. If you see the ratio of human development schemes and the infrastructure development schemes,
in the Punjab budget, it's highly skewed towards infrastructure development. That has to change. And unfortunately, there's not enough understanding in PND also regarding what human development schemes are and how they should be evaluated or approved. So we have had a challenge. I've been having a challenge for the last 2 years, trying to get my human development schemes approved. But what we are doing, with the Labor Department is doing, we are rolling out a scheme this time for employment facilitation centers in 5 different major cities of Punjab, in which we are going to do district profiling. We are going to to find out the pockets of local crafts and expertise which are available in the districts. And we are going to connect them with the training institutes, with the employers, because we are in touch with the employers also. And of course, also connect them with the federal government to create a synergy for overseas employment also, so that trafficking in persons, illegal immigration stops, and people are taught how to migrate successfully in a legal way. And because I think that overseas employment should be a priority of Punjab, because there are too many of us. Many of us can leave and without any really hurt to this province's economy. So we need to do that. Then there is somebody talked about female employment. We need to increase that. Now the issue is two-pronged. It is cultural. There's lots of because women are not considered very pious if they choose to work rather than stay at home. It always is the better thing for a woman to choose to stay at home, even if she has a degree. So this is a cultural thing. More dialogue has to be made, has to be done at the rural areas, in the poorer segments of society, because that's where the actual population is, because we are talking in a very small, elite group talking about this in a foreign language also. We need to take this debate to the rural areas where these things are. There lots of women are doing unpaid labor in the rural areas, but we need to invest more in the rural areas for the development of training and development. These are the two things that we are trying to do. We are also encouraging the establishment of daycare centers all over Punjab, because women, when they choose to go to work, have two problems. One, where will the children stay, and how to go, mobility. So we are trying to resolve these two issues. Thank you. Thank you very much, Ji. I completely agree. I'm a qualitative researcher. So yeah, community outreach. I would rather have this discussion in the middle of some village square. That would really make sense, but maybe the weather may not be that friendly. Before I move on to the next comment, I am going to make some honorable mentions. Then I'll take your questions. Miss Uzma Bhatt, Member Parliament. Ms. Kamal Liaquat, who was the Parliamentary Secretary for Forest and Environment, and Ms. Sumbul Malik, who is a Member Parliament, have also joined us. So, and Ms. Sonia Atta, who is a Member. Sonia Atta, my apologies. Welcome to our congregation. I'm going to move on to the next comment. Please go ahead. Thank you very much. Actually, after 18th Amendment, we expect a lot from provincial governments to take their own responsibility for the better governance. Unfortunately, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये जो डिसेंट्रलाइजेशन और डेवोल्यूशन की पूरी डिबेट है, ये तो इस वक्त मिसिंग है। पाकिस्तान पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल इशू। जब हम ये कहते हैं कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएं, तो वो गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट का जो सवाल आपने उठाया था डॉक्टर साहब, जो हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, वो मिसिंग है। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये भी फेयर नहीं है। यानी बड़े बिग सिटीज के अंदर तो बहुत ज्यादा फोकस होता है, लेकिन जो डेवोल्यूशन होनी चाहिए थी थ्रू लोकल गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेटली वो हमें नजर नहीं आती है। तो एक मुझे लगता है कि एक बड़ा सीरियस इशू है, जब आप यूथ को एम्पावर करने की बात करते हैं, तो अगर आपके पास लोकल गवर्नमेंट नहीं है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट, तो वो भी एक क्रिटिकल इशू होगा। सेकंड, ये जो एसडीजीज का जिसका आपने जिक्र किया, अगर आप मुझे, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान को देखने का मौका मिलता है और प्रोविंशियल डेवलपमेंट प्लान्स को, आप देखिए कि इसमें हमने कितना अलाइन किया हुआ है एसडीजीज को। वो एक बहुत मिसिंग चैप्टर है। बहुत जगह पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमने अलाइन किया हुआ, लेकिन बेशतर पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो इन दोनों चीजों को देखने की जरूरत है।
If you don't mind, sir, if I'll allow Madam, and then I'll take your comment. Thank you very much. I'm Mehboob Sultan, member Punjab Assembly, and I belong to District Chakwal. Currently, I'm working as General Secretary for Women Parliamentary Caucus, and I'm part of Standing Committee on Local Government and PND and Information and Culture. And I'm part of so many boards, and I've done so many different things. और Dr. Nizam साहब के साथ हमने higher education में I worked as a parliamentary secretary, and Dr. Nizam साहब तब VC थे, और then he joined as chairman HEC, और इनके साथ एक बड़ा अच्छा हमने काम भी किया और एक अच्छा ताल्लुक भी रहा यहाँ पे. Today I'm here to represent our Punjab Assembly side. There are so many my colleagues here, और यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने यूथ के हवाले से लिए. शगुफ्ता ने उनके बारे में कुछ बात भी की, और यहाँ पे जो हमने जितनी भी ये डायलॉग सुना इसमें बहुत सारे गैप्स भी हैं. और मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें चाहूँगी कि एज अ पार्लियामेंटेरियन वी आर सिटिंग हियर, देयर आर सो मेनी लेजिस्लेशंस हैव बीन डन. वी आर आई थिंक ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री, बट इम्प्लीमेंटेशन इज एन इशू. So if we see any gap in the legislation, please do let us know. Maybe we can be a voice on the floor of the House. Maybe we can do some amendments, or maybe we can do some betterments in the legislations. We have discussed about the youth, we have discussed about the gas, we have discussed about the youth bulbs, their asset and their liability. We have seen so many skilled department, they are giving skills to the youth. But there is one thing which I have noticed. I live in my constituency in my village, Shah, and I have so many people come to me, they come with their CV. Either they want the government job or they want to do nothing. So this is the main issue which I have observed in our rural areas. So maybe we can give them some awareness, maybe we can give them some guidance, or maybe we can give them, I live in Shah, that is a big area of mines and mineral, and we have so many schools. They are giving skills in the mines and minerals, mines association schools हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो mines and mineral के हवाले से training देती हैं, मगर still they don't have jobs. So definitely there is a gap between the requirement and our system or skills or education, whatever we are giving. But I think one more thing which I would ask कि आप सब ने बहुत अच्छे points raise किए, बहुत सारे issues raise किए, मगर आप हमारी थोड़ी सी रहनुमाई, we all know these are the issues with us, with the youth and all, but what are the solutions? What are the policy gaps? What are the legislations that we can do, and what are the amendments in the legislation that we can do? That's the main thing I think we can work for you in our capacity on the floor of the House. So thank you very much, sir, for organizing this dialogue and having us. Thank you, UNFPI, and for having us. Thank you very much. Thank you very much, madam. And it's really heartening to see a legislator actually asking us directly that what policy changes can you. I'm going to move on to Mr. Shafiqur Rahman sir for his comments. I'm Shafiqur Rahman. I'm representing Punjab Vocational Training Council, one of the organ of Skills Development and Entrepreneurship Department, Government of Punjab. आज की जो ये पॉलिसी डायलॉग है, इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें लेजिस्लेटर्स भी मौजूद हैं, इसमें हम काम करने वाले भी मौजूद हैं, और एकेडमिया के लोग भी मौजूद हैं. मैं फ्रैंकली 2-3 छोटी-छोटी बातें कहूँगा. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी तक बहुत कुछ किया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए. हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस नहीं है. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आया है. हम अगर पॉजिटिवली देखें तो वो लोग जो स्किल्स हासिल कर रहे हैं वो फौरी तौर पे सोसाइटी को कुछ लौटा भी रहे हैं, और ये रेशियो भी दिन ब दिन बढ़ रही है. अब यूनिवर्सिटीज भी अपनी एड के ऊपर लिख रहे हैं स्किल बेस्ड डिग्रीज, और यूनिवर्सिटीज की क्वालिफिकेशंस के साथ साथ भी लोग स्किल्स ले रहे हैं, और इस मुल्क के रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं. उसके साथ साथ जो लोग आईटीज की डिग्री और स्किल्स कर रहे हैं वो फौरी तौर पे कुछ ना कुछ कमा के भी ला रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, हम किस तरह से इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें जाना है. एक तो यह है कि अभी एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि पंजाब डाइवर्सिफाइड है. यहाँ जो गोल्डन ट्रायंगल है उसके ऊपर हमें स्टडी करना चाहिए. जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इसको रेप्लिकेट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पंजाब में. और आप देखें कि मिनिमम वेज की इंप्लीमेंटेशन अगर आप कर दें तो लोग गवर्नमेंट की जॉब के पीछे भागना छोड़ देंगे. अभी लोग गवर्नमेंट की जॉब के पीछे क्यों भागते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम मिनिमम वेज इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहे हैं.
سوشل سیکورٹی کے بینیفٹس جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں انشور کر لیں تو یہی یوتھ جو ہے یہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گی, یہی جو ان کے کرنٹ ٹرینڈز ہیں یہ مزید آگے بڑھ جائیں گے. اور گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم یہ گولڈن ٹرائنگل جیسی ٹرینڈز جو ہیں اور ایسی فیسلٹیز باقی ڈسٹرکٹ تک پھیلائیں, جس میں بھی گجرانوالہ, گجرات اور سیالکوٹ آتے ہیں, فیصل آباد آتے ہیں. اس طرح باقی سٹیز کو بھی اس ٹرینڈز کے اوپر ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگا, ان ٹرینڈز کو مزید آگے بڑھانا ہوگا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. سو آپ کا پہلا کامنٹ از اسپاٹ آن کہ سب سے پہلے اگر کوئی لیجسلیشن میں چینج کی ضرورت ہے, مے بی دا لیبر لاز نیڈ ٹو بی ریویوڈ اینڈ لیبر کورٹس اینڈ دیٹ دیئر میکنزم نیڈس ٹو بی ریویوڈ کہ وہ ریپرزینٹیو ہے کہ نہیں. ڈاکٹر علی. ایبسلیوٹلی. دیکھیے اس وقت ہماری جو منیمم ویج ہے وچ از 40,000. گورنمنٹ جو جاب ہے اس کی اراؤنڈ 60 to 70 ہے. تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین گورنمنٹ جابز اینڈ منیمم ویج جو پرائیویٹ سیکٹر میں مل رہی. دوسرا ایک لیبر کوڈ ہم لے کے آئے, وہ ہماری آپ میڈم سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو اپروو کریں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے اس وقت, اس میں بہت سارے پروگریسو ہم نے لیجسلیشنز کی ہیں, تو لیبر لاز کو سپورٹ کریں, اس کو اپروو کریں. تھینک یو. Thank you, Dr. Ali, please. See, I want to focus back on how the province can better align its public expenditures rather than benefiting from the youth towards the youth also. And I think ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کے حکومت کا ایک اسٹرکچر ہے, جب وہ خرچہ کرتا ہے تو اٹس سپوز ٹو رائٹ PC1 ڈاکومنٹ, PC2, PC3, PC4, PC5. I have met very senior bureaucrats جو کہتے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی PC5 ڈاکومنٹ نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ The PC1 document is conceptualization, اس کے بعد PC2 is feasibility, اس کے بعد PC3 I believe is the mid-tier or mid-term check, PC4 is completion of project, PC5 is post project 2-3 سال بعد کی evaluation. اگر آپ اپنے صوبے میں بھی اور ملک میں بھی پیسہ لگا کے اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتے اور اس کے بعد معذرت کے ساتھ تقریریں کریں کہ ہم نے بہت اچھا کمال کر دیا کیونکہ دیکھیں یہ بلڈنگ بن گئی ہے, اس بلڈنگ کا قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے. مثال کے طور پر اسلام آباد ایئرپورٹ موجودہ حکومت نے پچھلی ٹینیور کے اندر بنایا, something like $1 billion spent. What have we gotten out of it? گوادر ایئرپورٹ خالی پڑا ہوا ہے. I can continue to, and I have sat in on meetings, including the chief minister, including the prime minister, including the finance minister, اور projects کی discussion ہوتی ہے اور یہ discussion ہی نہیں ہوتی کہ اس کی feasibility ہے کہ نہیں ہے. And unfortunately, in a system that's run with Form 45 and Form 47, it won't happen. So یہ and میں ایک بات آخری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, so دو باتیں sorry before I end. One is that you are talking about job creation without engaging with the problem of 2% GDP growth. پچھلے 10 سال میں GDP economy collapse کس طرح کی? How did the economy collapse? You can respond. You can, of course, you're welcome to respond. I think Dr. Ali, if you could finish your point. I will if I'm allowed to finish. Mr. Ahmed Khan wants to make a He is welcome point. He is welcome. Let's not do cross talk. If you could just relax and take a baat 2 deep minute breath, karna hai, uska please, jitna Dr. merzi Ali, kare. go ahead and finish and you'll be given a proper chance. We have not Thank you very much had, for your cooperation. of course, we have not had any evaluation of why the economy collapsed in the last 10 years. کس کی حکومت کے دوران اور کیوں ہوا؟ دونوں حکومتیں. Forget about politics. Why did it happen? We haven't talked about. How can you talk about job creation without talking about how the economy collapsed? And okay, I'll stop here. All right, before I move on to the next comment, we're all very educated, cultured people here, and I'm sure our language is vast enough کہ ہم ایسے الفاظ بولیں جس سے کوئی offend نہ ہو. So with this positive note, I'm gonna take your comment, Miss. جی فارم 45 اور 47 کے سے نکل کے آگے بڑھیں کیونکہ ہمارے ملک میں ایک فاتحین کے طور پر پورے پاکستان کو پورے دنیا میں ریپرزینٹ کروایا اور الحمدللہ جو اعزاز ہمیں اب حاصل ہوا ہے وہ اس میں 45 ممالک میں سے پاکستان is one of them
एटॉमिक कंट्री है और उसने ये साबित कर दिया प्रैक्टिकली, अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लीज आप, और दूसरा जो आईटी बहुत ज्यादा ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसको पहले कभी ना कभी देखा था ना कभी सुना था, ये कोई डिबेट्स नहीं चल रही, ये जिस मौजूद पे हम बात कर रहे हैं तो बेहतर वही किसी पे किया जाए। बहुत मैं शुक्रिया। सीरियसली आप सबकी Thank you. एहसासात का ख्याल रखते हुए मैं कहूँगा कि ऐसी कॉन्ग्रेगेशन मेरे ख्याल में हमें दोबारा इकट्ठा करने के लिए 1 साल और चाहिए होगा। So if you could come back to take one last comment on public financing and how it can be leveraged to exploit the demographic dividend, please go ahead. I think it is मोटर के आइडिया से निकलना है। So, madam, if I could यूनिवर्सिटी add पे to that. यूनिवर्सिटी 270 यूनिवर्सिटीज हमने बना दी हैं और क्वालिटी हमारी नीचे से नीचे जा रही है। कोई एम्बागो लगाएं कि नो मोर ब्रिक एंड मॉर्टर, जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर यूटिलाइज करें। मतलब वो एक दफ्तर होता है, उसकी एक बिल्डिंग ऑलरेडी होती है और वो 3 बिल्डिंग्स और बना रहा होता है, वो पिछली छोड़ता भी नहीं है, अगली बना भी लेता है और उससे अगली भी बना लेता है। हमारे पास पैसे नहीं है। आई थिंक हमें थोड़ी सी कोई सेन उस पैसे के इस्तेमाल की जरूरत है। एंड एज अ स्टार्ट ये जो बिल्डिंगें बनाने वाला सीन है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत I think है। जो डॉक्टर दुर्रे नायाब ने जो बात की, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम इसके ऊपर सोचें कि इससे पहले कि हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, हम फ्रिवोलस वेस्टेज के बारे में सोचें। So we start with that. So I'll take your comment, please. मतलब देखिए वही वाली बात होती है कि वो उस बात से इसलिए हम बात को नहीं करते। किसी ने कहा कि जी आप बात करती हैं कि यूथ के पास कोई कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, वो तो हमें बिल्डिंग्स चाहिए होंगी। मैंने कहा क्यों बिल्डिंग्स चाहिए होंगी? आपके पास इतनी मस्जिदें हैं, वो कम्युनिटी सेंटर क्यों नहीं हो सकता? बिल्डिंग का पर्पस इज कम्युनिटी सेंटर। हमने क्यों समझा है कि वहां बस वो 5 नमाजों के अलावा वो जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। आई थिंक थोड़ी सी वो जिन डब्बों में हम बैठे हुए हैं ना, उनसे निकलने की जरूरत है। ये बंद कर दें खुदा के लिए, पैसा बच जाएगा। सुमैया अता शाहानी, मैविश के पॉइंट से मैं बड़ा एग्री करती हूँ कि इन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, इसके साथ मैं एग्री करती हूँ। और उसके अलावा सर ने बताया जी 2.2 जीडीपी पे ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान 2018 में 5.5 जीडीपी पे ग्रो कर रहा था। तो उस टाइम आप ये 45-47 को लेकर बैठेंगे तो ये डिस्कस्टिंग है हम सब के लिए कि या हम डायलॉग के लिए बैठे हैं और आप उन चीज़ों को लेके आए हैं जो मेरा ख्याल है हम लोगों को इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमने सऊदीया में जो आपके सामने है, अभी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी इंप्रूव हुई है, मेरा ख्याल है हम सबको देखना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वे की तरफ देखना, सोचना और उसकी तरफ बढ़ने की जरूरत है। एक कौम बनना है, इंतशार से हट के कौम बनकर सोचें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। डॉक्टर अली, मैं आपको सर एक और मैं बात ये करना चाह रही थी कि मैं लिया से बिलोंग करती हूँ, जैसे ये बता रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। हैरासमेंट हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है और ओवरबर्डन मेरा ख्याल है जो फीमेल हैं वो जॉब्स भी कर रही हैं और उनको जो है ना बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है रूरल एरियाज में। आप लोगों के पॉइंट्स में मतलब मैंने देर से ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है काफी सारी चीजें मैंने मिस की हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। इम्प्लीमेंटेशन मैडम मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। जो पहली इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में होनी चाहिए वो जेंडर पैरिटी और खासतौर पर रूरल एरियाज में रिमूव करने के लिए होनी चाहिए। डॉक्टर अली मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड चाहिए। सो फॉर्म 47 से किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं था, लेकिन हमारे सारा इकोनॉमिक्स लिटरेचर ये कहता है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के बगैर पब्लिक पैसा सही तरह नहीं लगता पूरी दुनिया में। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी साफ इलेक्शन से आती है, उसमें वो डिबेट हो चुकी है, वो अलग बात है। बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही होगी, मैं उसके ऊपर डिबेट पे नहीं जा रहा। दूसरी बात जो ग्रोथ की आपने की, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और आप किसी प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट से आप बात करेंगी तो 2018 में आपने जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर बताया दैट वाज बोरोड ग्रोथ। इसके ऊपर आप दूसरे इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, मैं इसके ऊपर आपको पूरा सेमेस्टर का लेक्चर दे सकता हूँ। Thank you very much. I mean, it may seem like a heated discussion, but I think it's such a point for us. We are all worried about it. It is something that we are all concerned, see it in every day and feel it every day. So I think this passion is quite, I think, heartening for me.
I would like to continue this discussion, but we have a third question, and I would like to launch that question with the request कि please 1 minute लीजिएगा, 1 से 2 minute से ज़्यादा मत लीजिएगा. Please choose your words carefully. There are others sitting, and we are nothing if you're not civilized. So, the third question is what are possible venues of resource mobilization to finance this agenda, and how can this be tapped? Budget के अंदर या हमारे resources को हम किस तरह remobilize कर सकते हैं towards youth development, starting with you, sir. Thank you, Maji. So once again, I can just highlight, what we're doing. So again, we're sort of on the cusp of the government and the private sector. So, we have as such no affiliation. We're an independent company. So, we tend to think more independently. So the few things that we've thought of and we've started doing. So one is the skills impact bond. Okay? That's a very innovative product, which is which has been developed by the British Asian Trust. It's being very well implemented in other countries. We've recently gotten it approved by the government as well. So that is an innovative form of financing where the government does not need to spend any money. Other things that we've started doing is developing sustainability projects. What that means is we're getting the industry to co-finance it, right? Because again, like I said, at the end of the day, it's the people, it's the employers who are going to benefit the most. The third thing that we're doing is self-funding, right? KG, we're getting the students themselves or the beneficiaries themselves to pay. And to facilitate that, we're coming up with loan schemes. Okay? And again, these are very different from the traditional these are skills loans, right? So and we're also developing something which we call the Pravas scheme, which is for international placement. So innovative finance may, especially given our export focus and our focus on sort of new trades versus the traditional कि जी अच्छा textile में stitcher बना दें, माली बना दें, cooking सिखा दें, we're sort of coming up with that. But the financing is also we're trying to come up with new ideas as well. Excellent. Ji, I'll take your comment. You had your hand for quite some time. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमाद रफीक और मैं पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन हो रही है. एंड दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वी इन गवर्नमेंट वी हैव दिस वी मस्ट हैव दिस ओपन हार्ट टू लिसन टू एवरीबडी. Everybody has a right to speak, and we must listen to them with an open heart. However, एक point मैं सिर्फ यहाँ पे highlight करना चाहूँगा. Recently गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने एक तो पंजाब लेवल में रेगुलेटरी जो हमारी रिजीम है ना सिर्फ उसको आसान बनाया है क्योंकि सारा हमने सिस्टम एंड टू एंड ऑटोमेटेड कर दिया है फॉर दिस स्किल सेक्टर. एंड सेकेंडली एक गवर्नमेंट की इसके अंदर एक रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है. उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट के अंडर तमाम इंस्टीट्यूट्स को ले आए हैं. लास्टली मैं कहूँगा कि जो बजट के हवाले से बात हो रही थी, BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो पहले सिर्फ लोन बेसिस पे लोगों को एक सस्टेनेबल दिया जाता था, उसके अंदर अब गवर्नमेंट ये सोच रही है और इसके अंदर हमें फॉरेन फंडेड GIZ ऑर्गेनाइजेशन वो फंड भी करने का सोच रही है कि उन्हीं खवातीन को स्किल्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट ना रहे जो उनको लोन दिया जाता है, बल्कि वो एक यूजफुल सिटीजन भी बन सके. तो ये एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि वो BISP की फंडिंग को ना सिर्फ इंक्रीज किया जाए बल्कि उनसे फिर स्किल सेक्टर के अंदर भी मजीद रिफॉर्म्स लाई जाए. Thank you very much. Sir, go ahead and then you're next. जी, शफकत रहमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है. पॉसिबल वेन्यूज, कोई भी गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती और बहुत सारे काम करने के होते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि यकदम ब्रिक एंड मॉर्टर को रोक दिया जाए और सारी फाइनेंसिंग इधर लगा दी जाए. इसमें और जो वेन्यूज हो सकते हैं वो ये है कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को यहाँ लेके आए. जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो स्किल सेक्टर के अंदर या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहें तो उन्हें आप टैक्स रिबेट्स दे सकते हैं, वर्क बेस्ड ट्रेनिंग्स को फरोग दे सकते हैं कि वो अपने शॉप फ्लोर्स के ऊपर इंडस्ट्री को यूज करते हुए लोगों को ट्रेनिंग्स दें ताकि
जी थैंक यू सो मच. मोहम्मद ताहिर अली रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. अच्छा, जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक तो टैक्स बेस्ड सोर्सेज हैं और एक नॉन टैक्स बेस्ड हैं. टैक्स बेस्ड में भी देखें तो अभी वी हैव जो रेट्स हैं दे आर ऑलरेडी ऑन द हायर साइड. कंज्यूमर जो सैलरी इनकम है वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट. वी कैन वर्क ऑन द जो इनफॉर्मल इकॉनमी है, देयर इज अ नीड टू उसको टैक्स नेट के अंदर लाने की जरूरत है. एंड दूसरा जो है जो नॉन टैक्स वेन्यूज है उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जिसके अंदर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बननी चाहिए, जिसके अंदर दैट वन ऑफ द थिंग्स. दूसरी जो हमारी अर्बन लैंड डेवलपमेंट है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए और उसके अंदर वैल्यू कैपिटल फाइनेंस जो है उसको लेके आना चाहिए. एंड थर्डली जो है जो स्ट्रेटेजिक प्राइवेटाइजेशन पे भी फोकस करना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मैडम रुखसाना. जी मैं सेकंड करूंगी. हम अपने जो कारपोरेट सेक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट को अपनी जॉब मार्केट के अंदर और लेबर मार्केट के अंदर, जिसमें फीमेल जो है 49% ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन का इस वक्त, और उसमें लेबर फोर्स के अंदर बहुत कम उनकी पार्टिसिपेशन है. तो हम बहुत से डोनर्स, इंटरनेशनल डोनर्स को, कारपोरेट्स को इस चीज़ की तरफ ला सकते हैं कि वो फीमेल्स को माइक्रो क्रेडिट्स और कुछ इस तरह की साथ स्किल सेट दे कि वो घर बैठे, ना कि वो घर से बाहर जाए और कुछ कमा के लाए और साथ उसकी पूरी फैमिली इग्नोर हो रही हो, जैसे कि वर्क और लाइफ बैलेंस जो है वो उसका खराब होता है. तो हम उसको उसके घर के ऊपर सपोर्ट करें और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे पहले फैमिली के अंदर बहुत अच्छे हालात पैदा करेगी, फिर बच्चों की एजुकेशन पे जाएगी, फिर कम्युनिटी को उसका फायदा होएगा जो वो वहाँ से डोमेस्टिक इंडस्ट्री से चीजें आ रही हैं. और चाइना हमारे सामने है जिसके अंदर हमने पूरी पॉपुलेशन को हमने रिसोर्सफुल किया. सिर्फ एक बंदे को हम अगर रिसोर्सफुल कर लेते हैं या उसको एक कमाने वाला बंदा इन्वेस्टमेंट उस पर कर देते हैं तो 6 या 7 लोग जो हैं उसके डिपेंडेंट्स में आके वो सारी चीजें मिटिगेट कर देते हैं. तो इसलिए सोसाइटी के हर बंदे को रिसोर्सफुल करना चाहिए, जिसमें बच्चों के ऊपर भी हमारी इन्वेस्टमेंट कोई 25-26 साल तक चल रही होती है एजुकेशन में. तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हों कि जितने भी उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन में अगर आगे जाना है तो वहाँ पे उनके लिए लोन की स्कीम्स हों. जैसे हाई स्कूल के बाद जो उन्होंने BS और MS और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनना है तो वहाँ पे वो जो उनकी अगली एजुकेशन है वो उस लोन स्कीम के तहत हो, जिसको वो जब बड़ा होके कमाने लगे तो उसको रिटर्न करे. तो ये एक चीज जो है वो बच्चों की 18-19 साल में उनको रिसोर्सफुल बनाना, फीमेल जो घर में फुल टाइम बैठी है आधी आबादी को कैप्चर किया हुआ है उसको फुल टाइम रिसोर्सफुल बनाना, और एक घर का मर्द जो है उसको बनाना. इससे हम शायद कोई तरक्की का थोड़ा सा ख्वाब देख सकते हैं. अदरवाइज किसी एक घर के फर्द के ऊपर डिपेंड करना या बच्चों पे डिपेंड करना और हम सोचें कि हमारी इन्वेस्टमेंट फैमिली के अंदर भी बहुत अच्छी हो जाएंगी और सोसाइटी के अंदर, तो ये थोड़ा सा शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर नहीं आता. एक्सीलेंट पॉइंट जी. मिस महविश यार. जी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूँगी और रिस्पॉन्ड भी करना चाहूँगी. जो बच्चों की तालीम के हवाले से है वो भी मौजूदा हुकूमत का जो होनहार स्कॉलरशिप है वो इसी हवाले से है कि जो बच्चे अपने तालीमी अखराजात पूरे नहीं कर सकते वो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो उनकी तमाम तर फीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी. तो ये होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से. उसके अलावा एक और चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इनिशिएटिव है जो कि वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन्स दे रही हैं फॉर द बिजनेस, कि कोई अपना अगर कारोबार शुरू करना चाहता है या कोई जो भी उनका अपना प्लान जमा कराएगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट उन्हें जो है वो लोन देगी और उस पर ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो आसान एक साथ में उस लोन को वापस हुकूमत को कर देंगे. और उसके अलावा खवातीन के हवाले से मैं एक और चीज़ जो ऐड करना चाहती थी, और मैडम CM साहिबा ने जो E-बाइक्स का इनिशिएटिव लिया और दिस इज मेनली टू एम्पावर दी वेमेन्स और यंग गर्ल्स. और इसकी स्कीम की सक्सेस जो मैंने अपनी आंखों से देखी कि मैं चुआसुद्दीन शाह एक छोटा सा टाउन है वहाँ रहती हूँ, वहाँ पे जब एक बच्ची मोटर बाइक चला रही थी तो तब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि दिस प्रोग्राम इज़ रियली सक्सेसफुल, क्योंकि हमारे देहातों में अगर बच्चियों में ये एम्पावरमेंट आ गई है और वो बाइक्स चला रही हैं जहाँ पे खवातीन का बाहर निकलने का भी इतना रवाज नहीं था, तो दिस इज़ अ सक्सेस. और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और चीज़ें लोगों की अडॉप्टेशन भी बढ़ेगी, लोगों को उस पर कन्विंस भी होंगे चीज़ों पे. और एक और चीज़ जो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं जो हुकूमत ने लिए हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें मजीद बेहतरी भी आएगी और हम सब ने एज ए नेशन, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज अबाउट आवर यूथ, तो उसमें हम सब ने अक्रॉस द पार्टी डिवाइड हम सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करना है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
थोड़ी सी बात ऐड अप करना चाहूंगी, मुझे पता है बहुत पेशेंटली सारे बैठे हुए हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड भी हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं मैडम सीएम साहबा ने। इसके अलावा वुमेन हॉस्टल भी फर्स्ट टाइम आया और पिंक बाइक्स भी आई हैं, और इस पे डे के जो सेंटर्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। थैंक यू। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा एज एन एकेडमिक एंड एज एन आउटसाइडर, हम तो आम आवाम है, मैं ज़रूर हुकूमत से रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप लोगों ने इतने सारे इनिशिएटिव्स का नाम लिया जो कि मेरे जैसे कॉमन मैन की नॉलेज में नहीं है, व्हाई नॉट पब्लिश ऑल ऑफ दिस, कीपिंग इन माइंड, आवाम के साथ शेयर कीजिए कि ये प्रोग्राम है, इतने सालों के लिए, इतने साल में ये डिलीवरेबल होगा, ताकि हम भी आपके साथ ऑन द सेम पेज और साथ चल सकें। सर ये वन कंबाइंड पब्लिकेशन, सर ये डिलीवर हो चुके हैं और फेज 2 और फेज 3 में प्रैक्टिकली ये लिए जा चुके इनिशिएटिव, और ये प्रैक्टिकली नहीं आई कंप्लीटली एग्री जी। मैं कह रहा हूँ सर हमारे साथ अगर हमारी नॉलेज में हो तो हम ज्यादा अप्रिशिएटिव हो अपनी हुकूमत की, और हमें पता हो कि उनका क्या 5 ईयर 10 ईयर प्लान है। सो कॉलेजेस में भी आ रही एब्सोल्युटली। सो मैं अब सेशन के एंड पे आ रहा हूँ। आई विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर निजाम एंड आफ्टर दैट वील हैव an open mic. I would request each and every one of you to give us 30 seconds जिसके अंदर एक ऐसा पॉलिसी इनिशिएटिव जो कि यूथ डेवलपमेंट में आप के लिए आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप वो हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो डॉक्टर निज़ाम सर, आपसे मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि आपकी टॉप 3 रिकमेंडेशंस जो हैं वो क्या होंगी इस लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, कि रिसोर्स किस तरह मोबिलाइज किए जा सकते हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए। पहली बात तो ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपके पार्टिसिपेंट्स को देख के, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लोग मौजूद थे यहाँ। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, बहुत कम लोग गवर्नमेंट से आते हैं, तो आज हर रेलेवेंट डिपार्टमेंट से लोग मौजूद हैं यहाँ। दूसरी बात वही है कि बात हमने पहले शुरू की थी कि थोड़ा सा स्टॉक टेकिंग अपने आप में करें, कि जो कुछ हम ऐलान कर रहे हैं, बात फिर वही हो रही कि हमने होनहार फाउंडेशन, हमने खुद से इन्वॉल्व हो सके। आपको क्वेश्चन पे वही डिग्री प्रोग्राम की बात होगी। क्वेश्चन ये था गवर्नमेंट की पॉलिसी कि हम जैसे स्किल लेवल में बैठे हैं यहाँ पे लोग, उसको मल्टीप्लाई करें कि किस तरह से हम इंटरनेशनल स्किल्स को, वो इंटरनेशनल जॉब के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए, घर बैठे हुए भी इंटरनेशनल काम आप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो अब्रॉड, बट वंस यू हैव स्किल्स रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल गिव यू जॉब हियर टू कैरी ऑन वर्क आउटसाइड द वर्ल्ड। तो हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। हम बात फिर वही कर रहे हैं कि हमारे पास कॉलेजेस, स्कूल्स, चीफ इकोनॉमिस्ट साहब आए, हमारे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। क्वेश्चन ये कि जो हैं उनका क्या हो रहा है? उसके पास कई स्कूल हमारे पास हैं जो खाली पड़े हुए हैं, बिकॉज दूर बहुत है, आबादी से दूर बहुत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके पास नहीं है। तो हाउ कैन दिस चिल्ड्रन गो टू दिस स्कूल्स? हमने एक दफा मैंने प्रपोजल दिया था कि एवरी मस्जिद शुड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्कूल, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। एवरी मॉस्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्कूल, और बिल्डिंग भी है, पंखे भी है, पानी भी है, शुरू कर दें इसको। इसमें क्या है, इसको कौन रोकता है इसको? पहले था ना वो बात, लेकिन सवाल है कि हमें सोच रहे हैं, ये बड़ा खुशी की बात ये है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं वो, पर अगेन पॉलिसी लेवल पे लोगों को जब तक आप लेकर नहीं आएंगे, जब वहाँ पार्लियामेंटेरियन भी बैठे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो पॉलिसी बना के जो रिकमेंडेशन दी है डॉक्टर अपने कि वो रिकमेंडेशंस को कन्वर्ट कैसे करें, ट्रांसलेट कैसे करें इन एक्शन प्लान्स। एक्शन प्लान बनाने के लिए आपको एक वर्किंग ग्रुप बनाना पड़ेगा जो बैठ के एक्शन प्लान बनाए कि किस तरह से हम पॉलिसीज को, इन रिकमेंडेशंस को, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। हालांकि बहुत लेट हो चुकी है, लेकिन कर सकते हैं। अभी भी अगर नहीं करेंगे तो और नुकसान आपका बाद में हो जाएगा। अगर अभी नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ये यंग पॉपुलेशन विल बिकम बर्डन, आप दे विल बिकम नॉट डिविडेंड बट डिजास्टर। लिहाजा अभी से इसको करेंगे, शोर करेंगे किस तरह उनको स्किल बनाए, एजुकेट बनाए, ना डिग्री के साथ। डिग्री हम दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, 247 यूनिवर्सिटीज आपके पास है, और कितनी यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे? हमें जरूरत नहीं है डिग्री, हमें जरूरत है इस वक्त कैसे यंग पॉपुलेशन को एक्टिव बनाया जाए ताकि वो अपना काम खुद कर सके। जब बात हुई एंटरप्रेन्योरशिप की, वो फ्री में नहीं आती, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यू टू हैव स्पेशल एलोकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। पहले के जमाने में सेमेदा करता था, अब वो नहीं करता। अब हमें स्किल डेवलपमेंट फंड, एंटरप्रेन्योरशिप फंड बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट के अंदर, कोई छोटे इदारे हैं तो वो फंड दे उनको, तब जाकर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। खुद से कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो लिहाजा हमें सब चीज़ें, मैंने कहा डिस्कशन बहुत अच्छी,
इसको अगर समराइज करेंगे तो इसके लिए हमें एक वर्किंग ग्रुप बनाए जो बैठ कर डिटेल में स्ट्रेटेजी बनाए, वर्केबल स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि स्ट्रक्चरल सोल्यूशन के बगैर इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निज़ाम, आई कम्प्लीटली एग्री। जब तक इस पे सीरियसली बैठ के एक एक्शन प्लान पे काम नहीं किया जाएगा जो कि एक फोकस्ड डिस्कशन होगा ऑन सीरियस फोकस्ड इश्यूज, तब तक वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। हमारे वो जो साथी हैं जिनके मौका नहीं मिला बात करने का, दिस नेक्स्ट राउंड इज फॉर देम। एवरीबडी हैज 30 सेकेंड्स। जिस 30 सेकेंड के अंदर आप जिस एक पॉलिसी इनिशिएटिव को फेवर करते हैं जो आपके ख्याल में यूथ डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। विल स्टार्ट विद यू सर ओवर इन दैट कॉर्नर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। मोहम्मद आसिफ, मैं सर डिप्टी सेक्रेटरी बजट एंड फाइनेंस हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें थी हमारे मुतल्लिका भी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें क्या टेक अवे यहाँ से ले जा सकता है। सर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए, तो जिस तरह डॉक्टर निज़ाम साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, सर हमें रीथिंक करना होगा अपने करिकुलम को, अपने स्किल्स को ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ, जो कि अभी नहीं हो पा रहा। और इसी तरह का अगर डायलॉग काइंडली इसको डिपार्टमेंटलाइज कर दें तो ये आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच सर, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद बिलाल, आई एम फ्रॉम अर्बन यूनिट। मेरा इसमें एक चीज़ ये थी कि हमने बहुत सी बातें की जिसमें, लेकिन हमने एग्रीकल्चर को इस सेक्टर में नहीं देखा। एग्रीकल्चर हमारी 35% एम्प्लॉयमेंट को लेता है। हम अगर इसमें वैल्यू एडिशन को लेके आएँ तो इसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेके आ सकते हैं, और इसमें लिंकेजेस नहीं है इंडस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर के। अगर हम इस लिंक को क्रिएट कर लें तो हम बहुत सी अच्छी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। एक्सीलेंट पॉइंट जी, प्लीज नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसफा खान है। मैं डायरेक्टर हूँ पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट पंजाब असेंबली से। सर सबसे पहले तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी कि मुझे 30 सेकंड से ज़्यादा दे दीजिएगा, 1 मिनट शायद मैं ले लूँ। उसकी वजह ये है कि मैं तकरीबन 2005 से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ, और अब लकीली मुझे पंजाब असेंबली जो एक इंस्टीट्यूशन है ऐसा जहाँ पे ये सारा कुछ आके एक फाइनलाइज होता है और एक कंक्रीट फॉर्म में आता है, वहाँ पे मुझे दोनों एंड से सिचुएशन को जरा देखने का मौका मिला है। तो मैंने देखा ये कि हम इसी तरह से बैठ के बातें तो करते हैं, मगर अब मुझे अपनी इस पोजीशन पे, करंट पोजीशन पे 2 साल हो गए तकरीबन काम करते हुए, मैंने नहीं देखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ऐसी रिकमेंडेशन हमें आई हो। इस तरह की चीज़ें होती तो हैं बट वो कहाँ जाती हैं आई डोंट नो। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन के हवाले से बात करें तो ख़वातीन के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हम अपने जो बॉय यूथ है उसके लिए भी हम माइक्रो फाइनेंसिंग जैसे प्रोग्राम शुरू करें, क्योंकि उनको भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारी फीमेल ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि मैं करंटली अभी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रही थी जिसमें मैंने देखा कि बच्चों का एक बहुत सारा इंटरेस्ट इसमें आया, और वो बगैर किसी स्टाइपेंड के, बगैर किसी पैसों के इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि अगर उनके पास पंजाब असेंबली की 8 वीक्स की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लेटर होगा तो उनको आगे जाके कहीं अच्छी नौकरी मिल सकती है। ये मैं मिस तानिया से भी डिस्कशन मैंने की थी कि अगर इस तरह के प्रोग्राम्स में आप यूथ के लिए उसको फंडिंग करें और इस तरह के प्रोग्राम्स को इनिशिएट करें, जो कि जैसे पंजाब असेंबली है या नेशनल असेंबली में तो ऑलरेडी बड़े स्केल पे हो रहा है। इस दफ़ा स्पीकर साहब ने अपने पर्सनल बजट से हम बहुत ही नॉमिनल से बहुत ही छोटी सी एक अमाउंट 20,000 बच्चों को दे रहे थे, तो स्पीकर साहब ने 40 जो इंटर्न्स थे उनको अपने पर्सनल बजट से उनको स्पॉन्सर किया। तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बैठी हैं जो वाकई यूथ के काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो कम अज़ कम उनकी स्किल डेवलपमेंट में ये चीज़ आती है कि इस तरह के प्रोग्राम्स का आगाज़ करें और इस तरह के प्रोग्राम्स को इंश्योर करें, चाहे छोटी सी एक अमाउंट के साथ, ताकि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ काम करके एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेन कर सकें, और जब वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने जाएं तो एटलीस्ट उनको ये कह के वापस ना कर दिया जाए कि जी आपके पास थैंक यू एक्सपीरियंस वेरी नहीं। मच थैंक यू सो मैडम, मच। आई कंप्लीटली एग्री जी। ये बारिश के पहले कहते हमारे पास अखुवत की है मिसाल, जो छोटे से सेटअप से शुरू हुए थे, अभी नेशन वाइड सेटअप। सो इस तरह के जो पौधे हम लगाएंगे वो यकीनन ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्लीज मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंबल मालिक हुसैन।
आई एम पार्लियामेंटेरियन, मैं 2018 में भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हूँ। PMLN से मेरा ताल्लुक है। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को देर ज्वाइन किया, लेकिन ऑन इनिशिएटिव के बाद जब कोई स्किल्स आती है तो उसको हमारी जो यूथ है उसको कैसे वो यूटिलाइज करेगी। ये है कि जब भी वो स्किल्स होती है उनके पास या एजुकेशन होती है, तो सबसे बड़ा हमारा ये प्रॉब्लम है कि जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उनसे उनका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अभी काफ़ी जो है ना हमारी यूथ को ये प्रॉब्लम्स है। जब हम यूथ को मौका ही नहीं देंगे तो उनके पास वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो ये जो अगर यूथ को अगर कोई मौका दिया जाता है किसी जॉब के लिए, तो उसके लिए ये जो एक्सपीरियंस का जो एक 2 साल का या 3 साल का है, इसके ऊपर हमें कुछ सोचने की जरूरत है। इसको हम सोचें यूथ के लिए, इसको हम आसान करें। ज़ाहिर है जब यूथ जॉब करेगी उसके पास एक्सपीरियंस आएगा तो वो आगे जाएगा। तो मैं ये आपने कहना बड़ा चाहूंगी अच्छा कि पॉइंट इसके रेज लिए किया जी हमें कि जो है यूथ को चांस देना एंट्री चाहिए। लेवल इश्यूज है यूथ Yes. को, उनको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। एक्सीलेंट पॉइंट जी, गो अहेड सर। Thank you so much. Just 2 bits. First thing is we should invest more and more in the education. And we said कि हमारे पास 270 universities हैं, but we have to look. We have also look at the distribution as well. वो कहाँ पे हैं, ठीक? They are all in the major cities. Secondly, हमने climate change को touch तो किया, but we didn't discuss in the detail. That should be more in the framework because it has a direct and indirect implications. जिसमें जो हमारी उसकी fiscal implications काफी ज़्यादा हैं. Most of the time we are reallocating the budget, और जो हमारी फिर इस तरह के youth programs होते हैं, because recently we could see that के floods आए हैं और बहुत सारा I can see that के budget reallocate होगा toward the flood relief उस side के ऊपर. Thank you. I agree जी, we should have had more focus on climate change, but unfortunately the discussion was, they take their own life. जी, go ahead next. जी, मैं इस ओवरऑल डिस्कशन से 3 पॉइंट्स हैं जो मैं टेक अवे, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में ये इम्प्लीमेंटेड है, बट इनको थोड़ा स्केल अप करने की जरूरत है। सबने बात की ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर से हमें अब जाना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो हमारा अभी जितनी भी प्रोसेसिंग है, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें डिजिटल मीडियम की तरफ जाना चाहिए, अदर देन मैनुअल जो अभी फिलहाल होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक गवर्नमेंट का थोड़ा सा इस तरफ फोकस आए कि जो स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ है ना, उसको वहां पे थोड़ी बजट एलोकेशन उस पे भी की जाए। थैंक यू। एक्सीलेंट मैडम। अर्बन एरियाज में तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में स्ट्रांगली ये समझती हूँ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो फंडिंग है, अगर हम रूरल एरियाज़ की वुमेन के स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले आएँ। मैंने मैडम सईदा नौशीन साहिबा हमारी वुमेन डिपार्टमेंट की हेड भी हैं, उनसे भी मैंने ये पॉइंट मूव किया हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली मनी है वो हम ख़वातीन जो रूरल एरियाज़ की ख़वातीन हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ डोनेट करें, ताकि वो फिर हमारे लिए एक फेवरेबल, एक अच्छे सिटीजन के तौर पे इंडिपेंडेंट होके सामने आए। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा अनटैप्ड रिसोर्स है जी। प्लीज गो अहेड सर। Quick 3 points. One is on the table. दूसरा ये है कि तमाम वर्क प्लेसेस पे जहाँ ख़वातीन काम करती हैं डे केयर होना चाहिए, और तीसरा ये है कि हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सीलेंट, थैंक यू मैम। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट का हम जब भी सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बैचलर्स मास्टर्स के बाद या फिर एक 20s में आके लोग कोई स्किल सीखेंगे। तो आई पर्सनली बिलीव, और मैंने देखा है कि बच्चों में ज़्यादा ये कैपेबिलिटी होती है कि वो स्किल सीखें। तो आई थिंक कि हमें ग्रेड 5 तक जो है वो लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाने चाहिए, और ग्रेड 5 के बाद जो है वो जिस तरह से बिजनेस स्किल्स होते हैं या फिर कोई जॉब स्किल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कई स्कूल्स में ऐसे होता है कि बच्चों को जो है वो फंडिंग दी जाती है स्कूल की तरफ से, और वो एक छोटा सा बिजनेस करके और वो पैसे अर्न करके वो दिखाते हैं, वो उनका एक प्रोजेक्ट होता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं हमें अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च करने चाहिए। उसके लिए बेशक आप जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स पहले ही इतनी फीस ले रहे हैं तो या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ व्हाटएवर, तो उसमें से थोड़ा सा एक पोर्शन निकाल के उनको ये स्किल सिखाना चाहिए, बिकॉज
जो है जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हमारे यूथ कर रही है उसके बाद स्किल उसके अंदर स्किल है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने लॉ किया था तो मुझे नहीं पता प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आके खुद धक्के खा के मैंने सीखा कि ऐसे प्रैक्टिस होती है। So I would like to say this Excellent much. point Thank जी, you. life skills at the primary and middle school level। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ, मैंने भी लॉ किया हुआ है और मैंने कोर्ट की शक्ल 3 साल में नहीं देखी थी। Afterwards I actually entered a court। शफकत साहब से मैं इधर से शुरू करवाता हूँ, सीक्वेंस में जाने दो, इधर से स्टार्ट करवाना। नहीं मैं तो इधर कॉर्नर से स्टार्ट करवाऊंगा, तो मैडम बैठी हुई हैं, सामने में क्लिक करिए, कंप्लीट कर रहे हैं इधर से, ठीक है। तो जहाँ तक पब्लिक सेक्टर की बात है, डेफिनेटली गवर्नमेंट इसमें आईडी इन्वेस्ट कर रही है, उसके साथ साथ उन्होंने ओनली रिकॉर्डिंग करी जा रही है और इसको मजीद बढ़ाने की अभी और भी जरूरत है। एज पर द नीड जिस हिसाब से हमारी आबादी है उस हिसाब से हमें स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। शुक्रिया। Thank you, sir. I'd like to start from the farther corner of this line, please. Sir, please go ahead. Thank you very much. I am Dr. Aves from Punjab Economic Research Institute, Paris. मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसमें डॉक्टर निज़ाम साहब ने कहा कि ये वहाँ वाकई को वर्किंग ग्रुप बनना चाहिए जो इस लेंस से डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को, डेवलपमेंट एलोकेशन को देखे। अदर देन हम SDGs को भी हम उसको केटर कर रहे होते हैं डेवलपमेंट में, जेंडर को भी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होने चाहिए जो कि एक सूबे के हैं, फिर देन ट्रिकल डाउन टू डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स। तो आई थिंक जब हमारे पास ये इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे और उनकी बेसिस पे इंडिकेटर्स बनेंगे, वो इंडिकेटर्स फिर हम हर डेवलपमेंट स्कीम में उसको कवर कर सकते हैं। तो मेरी प्रपोजल ये है कि HDI जो इंडस्ट्रीज हैं वही सूबों को, डिस्ट्रिक्ट्स को इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू। Absolutely, I think they are instrumental to understand कि development कैसे हो रही। Please go ahead, madam. You're next. मेरा नाम शाइस्ता कैसर है। मैं You could speak into the mic, madam. डिप्टी डायरेक्टर यूथ अफेयर्स पंजाब। सर, यूथ के लिए यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। मुझे मतलब मेरे लिए काफ़ी अवेयरनेस भी है। मैं फर्स्ट टाइम में ये अटेंड कर रही हूँ इस किस्म की डिस्कशन। तो सर सब लोग ही अच्छी बात कर रहे हैं और डिटेल से बात हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कहना। I think that was one of the best comments we had today. Madam Ruxana. कर ली। अभी मैं सिर्फ 2-3 बातों को सेकंड करूंगी। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और एजुकेशन एंड स्किल विद एम्पावरमेंट। क्योंकि बहुत से हमारे टेक्निकल लोग जो कि स्किलफुल हैं बट वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर उनकी वो एबिलिटी और कैपेबिलिटीज नहीं है। मार्केटिंग, कस्टमर केयर और बाकी वो IT की जॉब से रिलेटेड हैं बट उनकी बाकी जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, वो पॉलिश नहीं है। तो जब एजुकेशन और स्किल्स का कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए तो उसके अंदर उनकी हर टाइप की स्किल और एजुकेशन बढ़ा के उनको एम्पावर भी किया जाए। तो ये 3 सजेशंस हैं। जी मैडम प्लीज। सर हमारे पास जो है वो इस टाइप के काफ़ी प्रोग्राम चले हैं, तो अभी भी जो है वो प्रोग्रेस में है जो मैडम बात कर रही हैं। थैंक यू डॉक्टर अली। इस्लाह और इर्तिका का तकाजा ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखने का एक सिस्टम तश्कील करें। और प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी आइडिया होता है, वो लॉन्च करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने आज तक किसी इनकम्बेंट हुकूमत को नहीं देखा जो अपने आप को प्रेज ना करे। जो उसका हक है ठीक है, करे ज़रूर, लेकिन अपनी गलतियां भी सामने रखें। हमने क्या गलतियां की हैं, ताकि हम सब इंसान हैं और हम सब चाहते हैं पाकिस्तान बेहतर हो। अगर आप अपनी गलतियां सामने रख के उसके अंदर इस्लाहात दिखाएंगे और उसको सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे जो कि बाकी कौम जो है जिसके अंदर जो उसको ट्रस्ट कर सके,
تو ہم बेहतरी की तरफ आएंगे. ये शहरियों का हक है कि मंसूबे हमारे सामने रखे जाएं, डिटेल में रखे जाएं और उनका एक इवैल्यूएशन हमारे सामने 3 से 4 साल की मुद्दत के अंदर आए. शुक्रिया. Thank you very much, Dr. Ali, sir. थैंक यू. ये जो अभी बात हो रही थी ना यूथ के लिए कि एक्सपीरियंस, जॉब से पहले एक्सपीरियंस, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है कि बहुत सारे यूथ हमने देखा है कि वो इसलिए रिजेक्ट हो जाती है कि जो एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल का उनके पास. इस पे अगर फोकस किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है. Thank you, sir. Madam. I'll just mention one thing. What we are doing actually, Labor Department, the quantum of children out of school is huge in Punjab, especially in the rural areas. My policy suggestion would be that we create a balance between our interventions in the urban areas as well as the rural areas, because most of the population is in the rural areas and they are uneducated and they don't have any resources. So what we are doing for children's education is that we are trying to take all these children from child labor to schools. 5-6 महीने से हमने शुरू किया है काम. हमने around 2000 बच्चों को different educational institutions में refer किया है, and we are monitoring their progress also. So this is an initiative that the Labor Department is making. Actually, मेरा comment सिर्फ ये है कि जो provincial budgets हैं उसमें youth के ऊपर investment जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, और ये जो infrastructure development है इसमें और human development के अंदर जो है ना एक फर्क होना चाहिए. और third last comment ये कि ये जो provincial budgets हैं इसकी जो distribution है districts के context में without devolution नहीं हो सकती. This is my concern. दोनों points बहुत अच्छे हैं जी. Strong local government and then spending more on human development like education and health. Sir, go ahead. Thank you. I think as a जैसे हुकूमत के इदारा है हम, I like the feedback. I think काफी चीजें आज सीखने को मिली हैं. So I'll just stop at that. अब अपने आप को मशवरा देने से बेहतर है मैं खुद जाके कर ही लूँ. Excellent. Excellent response. सबकी बातों को मैं बहुत सेकंड करूंगी कि सबके ओपिनियन बहुत सुपर डुपर थे. सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है. हमें इम्प्लीफाई करने की जरूरत है. एक्शन प्लान का मतलब यही है कि हमें प्रैक्टिकली फॉर्म में काम करना चाहिए. और एक छोटी सी सजेशन दूंगी, मैं इस पे काम भी कर रही हूँ. यूथ इन्वेस्टमेंट फंड कैम्प किया जाए जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स और ओवरसीज पाकिस्तान वो सारे मिलके एक उनकी कोलैबोरेशन से ऐसी चीज बने जो हमारे यूथ को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके. थैंक यू. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं अपना एक व्यू शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले मुझे शेखुपुरा जाने का जो है मेरे हुआ. मैं शेखुपुरा गई तो वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज थी. रोड पे बेशुमार फैक्ट्रीज थी लेकिन वहाँ स्कूल्स नहीं थे. तो मैं ये चाहती हूँ कि फैक्ट्री मालकान के लिए कानून साजी की जाए कि वो अपने जितने भी उनके लेबर वहाँ काम करती है उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाए और उसकी तालीम की जिम्मेदारी लें. शुक्रिया. बहुत अच्छा पॉइंट है. मैं चाह रहा था स्पेसिफिकली CSR के बारे में सवाल पूछना बट हमें मौका नहीं मिला. थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. गो अहेड मैडम. टाइम ले रही हो. नहीं, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे. आई थिंक इसको कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कंट्रीब्यूशन देते हैं इस चीज के, तो उसके जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है वो हमारा डिपार्टमेंट भी खोलता है और भी वो फंडिंग दे. तो दे आर ऑलरेडी पेइंग फॉर दैट. तो उनके ऊपर इनकम्बेंट नहीं कि वो स्कूल्स खोले अपने एरियाज में. Madam, you could ask them whether they're paying their due or not. Please go ahead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम उस्मा भट्ट है और मैं PMLN से MP हूँ. 2-3 पॉइंट्स मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मेरी एक कुलीग ने बोला कि 5 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको कोई स्किल सिखानी चाहिए, तो मुझे याद है कि हम लोग भी जब स्कूल्स में होते थे तो हमारा एक पीरियड होता था, बच्चियों को वो मुख्तलिफ क्राफ्ट्स वगैरह सिखाते थे. और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, चाइना है, जापान है, वहाँ पे छोटे बच्चों को इस चीज़ की वो स्किल्स देते हैं. बच्चों को अपना काम करने की भी आदत पड़ती है घरों के अंदर भी, और वो कोई ना कोई उनको हुनर भी आ जाता है. और दूसरी बात ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा फीसें चार्ज कर रही हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट में तो चले मुनासिब है उनकी फीस, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा फीस वो चार्ज कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि हर सेमेस्टर के बाद ये यूनिवर्सिटी की हेडिक होनी चाहिए कि वो बच्चों को एक फिक्स टाइम के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम वो खुद अरेंज करके दें, क्योंकि हर बच्चे का CGPA इतना नहीं आता कि वो इंटर्नशिप प्रोग्राम में जा सके.
یا وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور اگر یہ ہم ایکسپیرینس بچوں سے مانگنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ جو ڈگری ہے اس کے حوالے سے ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کا فکس کرے انٹرنشپ پروگرام کو. تھینک یو. Thank you very much, Madam. Miss Sonia Ashir, Member Parliament, نے ہمیں join کیا. So if you have any last comments, ma'am. جی بہت شکریہ. سوری فار بینگ لیٹ. ایکچولی میرے ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ تھی اور وہ کچھ ایجنڈاز تھے, کچھ اسٹریٹجیز تھی جن کو تیار کرنے میں ہمیں وقت لگ گیا. تو ابھی تک کچھ ہی دیر مجھے یہاں پر ابھی آئے ہوئے ہوئے, لیکن میں نے جو کنکلوژن نکالا اور دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اسکلز جو ہیں ہمارے بچوں کی آج کے دور میں یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ڈگریز ہونا, آپ کے پاس بڑے بڑے سرٹیفکیٹس ہونا, دیٹ گریٹ, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اسکلز جو ہیں وہ آپ کی روحانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہت اچھے ہیں. تو اس لیے بچوں کو ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ اسکولس میں کچھ ایسے ہم اگر رولز بنائیں کہ ان کو ساتھ ساتھ ہم اسکلز بھی دیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہو جائے گا. بہت شکریہ. Thank you very much, madam. And thank you for joining us and making time for coming to join us. I'm going to revert back to Miss Tania for her final comments. Thank you everyone. Actually بہت اچھا لگا آپ سب کی باتیں سن کے, and a lot has been discussed today. Actually I'm just going to add a point which I feel that, you know, being with UNFPA, I started the opening remarks with one of the key areas جس میں ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں is policy advocacy and legislation implementation. And I wanted to stress تھوڑا سا sensitive matter ہے لیکن کچھ لوگوں نے بات بھی کی. Some of what we are discussing is related to social norms, and جیسے DG صاحبہ بھی mention کر رہی تھی about rural areas میں the incidence of child marriage is something that's very significant, and that often acts, or early marriage acts as a deterrent and prevents young girls from, you know, sort of continuing education and then eventually entering to the labor workforce and even accessing vocational skills and other skills. So ye chota sa point main add karna cha rahi thi for our parliamentarians here to, you know, take up to the higher levels ke Punjab mein currently the age of marriage is still 16, whereas in Sindh, you know, it's 18, and ICT has also moved the bill to 18. So I'm hopeful that UNFPA can support this you know, area of work, and we can see here through the discussion ke kis tarah se it's so important to address that factor as well. So many thanks from my side, from UNFPA, and I'll handing it over to our moderators. Thank you. Thank you, Ms. Tania. Ma'am, please go ahead. Thank you very much. I quickly add 2-3 points. Number one is quality education, and second thing is the implementation of law. Third thing is continuity of the policies, and the fourth and most important, which I think have the solution for everything, is political stability. And thank you, Tanya. We are already working with you on all the issues that we have discussed, and inshallah we'll further work on that. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, madam. انگریزی میں ایک کہاوت ہے جی, save the best for last. So we have reached to that place where I know this discussion went many places, some intended, some unintended, but it was all very informative. It was I learned a lot, and I cannot hope but feel کہ اس کا ہم ایک follow up کریں, because this was just looks like we just started breaking the ice and like scratching the surface of the problem. But I hope اگر اس کا ایک follow up ہو تو we'll get deeper into towards an action plan. So even though it was a little chaotic, luckily we have Dr. Sajid to make sense of it all for us. So please, sir, go ahead. Thank you, Ji. Assalamu alaikum. I may not be the best, but the job that I have is the best. کہ ہمارے تمام جو معزز مہمان جو آ جائے, ان کا شکریہ ادا کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ مجھے دی گئی ہے. And I think this is always the most beautiful job جو مجھے دی جاتی ہے. تو we're really thankful
to all of you, जैसे डॉक्टर निजाम साहब ने कहा कि तकरीबन हर जो स्टेक होल्डर है वो इस टेबल के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है या मौजूद रहा है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। 3 क्विक पॉइंट्स PND के लिए और खासकर हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं और ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस जो यहाँ पे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो डायलॉग है दैट शुड बी द फर्स्ट डायलॉग ऑफ दिस डिस्कशन, जो बिगिनिंग है वो होनी चाहिए, नॉट बी द लास्ट वन। उसके लिए 3-4 चीजें हैं जो हमें करना होंगी। एक तो जो मुतलका हमारे डिपार्टमेंट्स यहाँ आज हैं, अगर वो वेरी काइंडली अपना फोकल पर्सन, हमारा जो इनिशिएटिव है डेटा फॉर डेवलपमेंट एक ब्रॉड, उसके लिए अगर अपना एक फोकल पर्सन दे दें और हमें कोई भी एक मीटिंग का टाइम थ्रू UNFPA हमारी जो कोलीग तानिया है वो दे दें, ताकि हम जो आपके डिपार्टमेंट से मुतलका जो काम है वो हम आपके पास लेके आ सकें, यूथ रिलेटेड भी और जो बाकी भी। तो दैट विल बी अवर फर्स्ट जो रिक्वेस्ट है प्रोसीजरल कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा मेरा ख्याल है यही फोकल पर्सन जो हैं, जैसे डॉक्टर निजाम साहब ने कहा, दे कैन बी काइंड ऑफ ए वर्किंग ग्रुप, एक डिपार्टमेंटल का एक वर्किंग ग्रुप जो है वो अगर नोटिफाई अगर आप कर दें हमें। आई नो हम भूल जाते हैं चीजें, हम भी भूल जाते हैं, यहाँ से निकलेंगे किसी और डायलॉग का एक और का इंतजार होगा, वहां कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे या ओपनिंग होंगे, ये भूल जाएंगे। तो अगर आप एक नोटिफाई अगर फोकल पर्सन कर दें तो वो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी उसको एंगेज करने में। तीसरा, आई थिंक जो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया, इट रियली स्पीक्स योर कमिटमेंट कि आप थ्रू आउट हमारे साथ रहे, वरना बड़ा कम होता है कि 5, 6, 7 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो थ्रू आउट सेशन में बैठे हैं। आसफा साहिबा, हम आपसे अगर रिक्वेस्ट कर सकें कि मे बी यही जो मेंबर्स हैं काइंड ऑफ एक 5-6, हम थोड़ा सा इसको जरा स्ट्रक्चर कर लें कि इस डिस्कशन को पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर कैसे बेहतर अंदाज में उठाया जा सकता है। और एक चीज जो हम आपसे चाहेंगे, डू इनवाइट अस इवन फॉर अकाउंटेबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट को जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुलाइए कि आपने जो इनिशिएटिव्स लिए उनका इम्पैक्ट कहाँ पे है। तो आई थिंक जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं क्वालिटी स्पेंडिंग के लिए वो ये होगी कि आप अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स में आप कॉल कीजिए जो सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, बाकी लोग हैं जो मुतलका आपके DGs हैं महकमों के, उनसे प्रेजेंटेशंस लीजिए। और शायद यही ऑनरेबल मेंबर जो आज बैठे हैं, इन्हीं का एक ग्रुप जो है वो तश्कील दिया जा सकता है। वी कैन वर्क विद यू कि इसको कैसे थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया जा सकता है उसके अंदर। तो एक ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रहेगी। तीसरा जो है PhD के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा आज का बड़ा की स्टेक होल्डर था, अनफॉर्चुनेटली वो फुल टाइम हमारे साथ नहीं बैठ सके, सम अनप्लान्ड और प्लान्ड एंगेजमेंट्स की वजह से। आई थिंक वो 2-3 चीजें हैं कि उनको एक बड़ा क्रिटिकल इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस, थर्ड पार्टी इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस, जो यूथ रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आज तक, उनकी एक जो असेसमेंट है वो PND जो है वो उसको लीड करे, करवाए, और एक थर्ड पार्टी वो करे, और वो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो बाकी मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ उसको शेयर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज द ओनली वे फॉर क्वालिटी पब्लिक स्पेंडिंग, कि वो कितनी अच्छी स्पेंडिंग हुई है उसके अंदर। सेकंड लास्ट, आई थिंक स्किल्स डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा बात हुई है, बट वी रियली नीड ए वेरी क्रिटिकल डायग्नोस्टिक एनालिसिस कि हमारा जो सिस्टम है TVET का या स्किल्स डेवलपमेंट का, उसको कितना ओवरहॉल होने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो स्किल्स डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनी हैं वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में बनी हैं, आज भी वो बिस्प के अंडर आती हैं ताकि शाम को सिर्फ खाना मिल जाए, एलिमेंट्री स्किल्स। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्किल्स डेवलपमेंट का सिस्टम है एज ए ब्रॉडर सिस्टम है, किसी इंस्टीट्यूशन की या इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, वो मॉडर्न स्किल्स जो AI के साथ इंटीग्रेटेड हों, जो बाकी चीजों के साथ इंटीग्रेटेड हों, उसको डिलीवर कर सके। तो एक जो स्टडी है वी वुड रियली रिक्वेस्ट, वो चाहे पार्लियामेंट की स्टेज से हो जाए, चाहे वो PND की तरफ से हो जाए, चाहे वो मुतलका आई एम श्योर तानिया एंड हर टीम विल बी रेडी टू सपोर्ट, UNFPA रिमेन्स अवेलेबल, इस पे डिस्कशन हो सकती है कि एक बड़ा क्रिटिकल डायग्नोस्टिक एनालिसिस किया जाए स्किल डेवलपमेंट का, और उसकी बेस पे पंजाब अपनी स्किल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाए अगले 4-5 साल की, बट बेस्ड ऑन दैट डायग्नोस्टिक, नॉट ये कि हमारे पास ये इनिशिएटिव्स हैं, वो पूरे का पूरा एक जो है वो उसके करिए। आई थिंक फाइनेंसिंग की बहुत ज्यादा बात होती है,
बट हमारे यहाँ इस वक्त भी पंजाब में शायद इनोवेटिव फाइनेंसिंग एज ए स्ट्रेटजी, हमारे पास फंड तो है, एक हमने बनाया हुआ है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट इज देयर ए स्ट्रेटजी कि हमारे यहाँ जो एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग की जो मॉडर्न टूल्स हैं उसकी क्या कोई स्ट्रेटजी है? उसके लिए मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ मैपिंग जो है, एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाए। अगेन पीएनडी कैन लीड, या आप उसको देख सकते हैं कि उसकी जो स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हैं जो प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो शायद ये जो डिस्कशन है ये एक एक्शन प्लान के अंदर हम इसको लेके जा सकेंगे। उसके लिए हमारी जो कॉलीग हैं तानिया यहाँ, तो शी कैन बी द फोकल पर्सन इन पंजाब के उस कॉन्टेक्स्ट में, एंड बिलीव कि हम इसकी समरी के साथ वी विल बी कमिंग बैक टू यू, वी विल बी चेजिंग यू on these चीजें जो आज आपने कही हैं। With this, my big thanks to on behalf of Sustainable Development Policy Institute and mainly on behalf of UNFPA Pakistan and UNFPA Punjab, जिनका ये इनिशिएटिव है डेटा फॉर डेवलपमेंट, उनका बहुत शुक्रिया हम सबको इकट्ठा करने में। उनकी बहुत ज्यादा इसमें है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जो भी लोग आए आके चले गए उन सबका भी बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, स्किल्स डेवलपमेंट से हैं, हायर एजुकेशन से हैं, तो वी रियली आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू और ईच वन ऑफ यू। आवर बिगेस्ट थैंक्स आर टू यू एक्चुअली। बहुत सारे लोग हैं वो टाइम से पहले आए हुए थे, हमसे पहले आए हुए थे। ऑनेस्टली डॉक्टर निजाम साहब मुझसे पहले आए हुए थे, एंड वी वर रियली थैंकफुल कि आप लोग आए। हमने 2 घंटे का प्लान किया था, सेशन 3 घंटे पे चला गया है। दैट स्पीक्स योर कमिटमेंट। एंड फाइनली प्लीज ज्वाइन मी इन थैंकिंग both the teams of FC University, College University and my team from SDPI जिन्होंने इस पूरे इवेंट को बनाया। हम तो वो एंकर हैं जो सामने बैठ जाते हैं। These are the people who are behind it. समीर है, उमर है, जाहिद है, हमारे सामने जो है वो खिजरा हैं, नदिया हैं और मिस फातिमा हैं। These are the people कि आज की ये सारी डिस्कशन जो है वो हो सकी। तो फ्रॉम माई साइड तमाम हमारे मीडिया के लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, कैमरामैन जो चाय हमें पिला रहे थे अच्छी अच्छी, उन सब का भी, तो आप तमाम लोगों का ऑन बिहाफ ऑफ UNFPA, ऑन बिहाफ ऑफ SDPI एंड ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर वकास, आवर चैंपियन ऑफ टुडेज डिस्कशन, बहुत अच्छा मॉडरेट किया। और आई थिंक लेट्स लीव दीज टेबल्स द कमिटमेंट के हम इसको जेन्युइनली एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और जो भी यहाँ डिस्कशन हुई, लेट्स टेक इट एज एवरीवन's पैशन टू कंट्रीब्यूट and live positively. Big thanks to all of you. Ladies and gentlemen, with this, we'll be closing this discussion formally. Lunch is served. Please enjoy your lunch. Thank you very much for joining us.